നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ സമഗ്ര വാർത്തകളുമായി ഉച്ചവാർത്ത ആരംഭിക്കുന്നു. ആദ്യം പ്രധാന തലക്കെട്ടുകളിലേക്ക്. കടുത്ത പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ വഖഫ് നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അവതരണത്തിന് മുൻപ് ഭേദഗതി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ. ബില്ല് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്നും ആവശ്യമായ ചർച്ചകൾ നടന്നില്ല എന്നും എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ. ബില്ല് നിയമപരമെന്ന് അമിത്ഷാ. പാർലമെന്റിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം വഖഫ് ബില്ലിനായുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് നൽകിയെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു. പാർട്ടി നിർണായക ഘട്ടത്തിലെന്ന് പ്രകാശ് കാരാട്ട്. ബി.ജെ.പിക്കെതിരെ വിശാല മതേതര കൂട്ടായ്മ വേണമെന്നും CPM പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലെ പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൽ കാരാട്ട്. പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് ശേഷം അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുണ്ടാകുമെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി M.V. ഗോവിന്ദൻ അമൃത വാർത്തകളോട്. തലമുറ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് തോമസ് ഐസക്. 24-ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് മധുരയിൽ തുടക്കമായി. ആശാപ്രവർത്തകരെ വീണ്ടും ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ. നാളെ 3 മണിക്ക് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ചേംബറിൽ ചർച്ച. വ്യക്തതയുള്ള ഉത്തരവ് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ സമരപ്പന്തൽ വിടൂ എന്ന് ആശാപ്രവർത്തകർ. വാളയാർ സഹോദരിമാരുടെ മരണത്തിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ അറസ്റ്റ് ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞു. നടപടി മാതാപിതാക്കളെ പ്രതികളാക്കി. CBI നൽകിയ കുറ്റപത്രത്തിനെതിരെ മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ ഹർജി. വിവാദങ്ങൾക്കിടെ എമ്പുരാന്റെ റീ എഡിറ്റ് പതിപ്പ് തിയേറ്ററുകളിൽ. മാറ്റം 24 സീനുകളിൽ. കലാകാരന്മാർക്ക് അതിരുകളില്ലാത്ത ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ പ്രേംകുമാർ. എമ്പുരാൻ സിനിമയിൽ കത്രിക വെച്ചതിനോട് യോജിപ്പില്ലെന്നും അസഹിഷ്ണുതയുള്ള സിനിമയല്ല ഇതെന്നും പ്രേംകുമാർ. ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്കാണ് ആദ്യം പോകുന്നത്. കടുത്ത പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ വഖഫ് നിയമ ഭേദഗതി ബില്ല് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തടസ്സവാദം ഉന്നയിച്ച് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തി. ഭേദഗതിയിലെ എതിർപ്പുകൾ പറയാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും ബുൾഡോസർ നയമാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും കോൺഗ്രസ് MP കെ.സി. വേണുഗോപാൽ ആരോപിച്ചു. അവതരണത്തിന് മുന്നേ ഭേദഗതി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണെന്നും കെ.സി. പറഞ്ഞു. പുതിയ ഭേദഗതികൾ അനുവദിക്കാൻ JPCക്ക് അധികാരമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യമാണ് N.K. പ്രേമചന്ദ്രൻ MP ഉന്നയിച്ചത്. ബിൽ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്നും ബില്ലിൽ ആവശ്യമായ ചർച്ചകൾ നടന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് JPCക്ക് വിട്ടതെന്നും എല്ലാം നിയമപരമെന്നും അമിത്ഷാ മറുപടി നൽകി. പാർലമെന്റിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം വഖഫ് ബില്ലിനായുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് നൽകിയെന്ന് ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു പറഞ്ഞു. हम सबको बहुत डिटेल में जाने का भी आवश्यकता नहीं है. कमेटी के बारे में उसका जिक्र काफी हो चुके हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो कमेटी इस बार दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है. इसलिए मैं जो ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं. माननीय सदस्य ने जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है, मैं इसके हार्द को सदन के सामने रखना चाहता हूं. भारत सरकार की कैबिनेट ने इस बारे में एक बिल अप्रूव कर सदन के सामने रखा. आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका Sir, Count and Structure, page 615. The motion for reference of a bill to a select committee may include instruction to the committee to consider matters other than those dealt with in the bill but relating to the subject matter of the bill. Instruction to the committee for amendments of such sections of the Parent Act as are not covered by the amending bill
whenever given, are to be specific and clear, unquote. Okay. That means unless and until the House specifically directed to go into this, they have no right to make new provisions in the bill. It is beyond the powers of the Joint Parliamentary Committee they have acted, for which I am seeking a ruling from आप बात खत्म करें। House, at least the members has to have the power to give amendments. Yesterday what happened, sir? This bill has been brought into the notice of member only afternoon, around afternoon. Then the amendment time will be ceased till 3:30. Then how can the members move amendments, sir? This is basically, you are actually bulldozing the legislation, sir. This type of legislation bulldozing is not happening in this house, sir. Sir, members has to go. Why that, sir? You need to give time for amendment, sir. Sir, there are several provisions to be given amendment. There is no time at all. ओके आप सुनिए, आप बैठिए एक विषय। വഖഫ് നിയമ ഭേദഗതി ബില്ല് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन था पहले, ऑटोमेटिक अपील करने का राइट नहीं था, स्पेशल रिव्यू पिटीशन ही कर सकते थे ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बाद। तो आज हमने एक अच्छा सोच के साथ खुला मन से ये कहा है कि अब अगर आप वक्फ बोर्ड का निर्णय से खुश नहीं है, वक्फ ट्राइब्यूनल का निर्णय से खुश नहीं है, तो आप अदालत जा सकते हैं। ये रास्ता भी हमने खोल दिया है। उसके बाद सर कंट्रीब्यूशन, एनुअल कंट्रीब्यूशन, ये भी आपका ही सुझाव था कमेटी वालों का कि जो कंट्रीब्यूशन देते हैं वक्फ बोर्ड मुतावली जो देते हैं उसको घटाना चाहिए, तो उसको 7% से 5% घटा दिया है ताकि ज़्यादा पैसा आप चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्चा कर सके। तो अच्छा जो प्रॉपर्टी मैनेज करता है वो तो सरकार को शाबाशी देंगे। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जो हमको रखना पड़ा, आपने लॉ ऑफ लिमिटेशन को इस वक्फ बोर्ड का प्रावधान से हटा दिया था, इसको हमने लगाया है। तो अब तो मालूम है दी लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 will now apply to the waqf property claims from the date of commencement of this act, aiming to reduce prolonged litigation। ये बहुत बड़ा मैं मानता हूँ एक कदम उठाया है। और जो सेक्शन 40 सबसे ड्रैकोनियन प्रोविजन इस एक्ट में था तो सेक्शन 40 था। सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड, आप लोग बार बार कहते हैं ना ये ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। सेक्शन 40 में किसी भी जमीन को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, वो प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। वो कोई भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके फिर किसी गरीब के लिए नहीं करना है। वो लोग, कुछ लोग, चंद लोग अपने के लिए, अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओवैसी मैं तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन सर ये प्रावधान को इतना मिसयूज हुआ, इसलिए तो इतना लाखों प्रॉपर्टी की संख्या बढ़ गई। अब किसी प्रॉपर्टी को कैसे आप क्लेम कर सकते हैं? इसलिए इस सेक्शन 40 की वजह से, अध्यक्ष महोदय जी, इस सेक्शन 40 की वजह से कई मुद्दे इस देश में आया है। आज पूरा हमारा देश का क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो कैथोलिक चर्च काउंसिल के लोग, भारत चर्च ग्रुप के लोग, केरला में हो या देश भर में, आज पुकार के क्यों कह रहा है कि वक्त संशोधन बिल जल्दी पारित होना चाहिए। वो इसलिए कि सेक्शन 40 का मिसयूज होता था। सर आप सोचिए, केरला का एमपी, तमिलनाडु का एमपी लोग तो सोचिए, अगर आपने गलती से इस बिल का विरोध कर दिया तो आप क्या विरोध झेलना पड़ेगा बाहर में। आप कल्पना कीजिएगा अभी से, आप सोचिए। വഖഫ് ബില്ല് സുതാര്യമെന്ന് JPC അധ്യക്ഷൻ ജഗദാംബിക പാൽ. ബില്ല് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് എതിരല്ല എന്നും സാധാരണക്കാരായ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കാനാണ് ബില്ലെന്നും ജഗദാംബിക പാൽ വ്യക്തമാക്കി. देखिए, ये मेहनत का रंगाई जो सरकार ने जिस उद्देश्य से दिया था स्पीकर साहब से कि इस बिल को आप JPC को सुपर्द कर दें और JPC से पूरे देश के स्टेक होल्डर के साथ बात करें। मैं आज कह सकता हूं कि जब हमने साउथ इंडिया का दौरा किया था और हम नॉर्थ इंडिया का दौरा नहीं कर पाए थे, उड़ीसा का, आसाम का, वेस्ट बंगाल का, यूपी बिहार का, तो
तो एक दिन संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, तो हमने कहा हम तो अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। उन्होंने कहा हमारी मंशा कि देश के सभी राज्यों में आप जाएं और सबसे आप स्टेक होल्डर से बात करें। तो आज वो हमारी जो 428 पेज की हमने रिपोर्ट दी। വഖഫ് സ്വത്തുക്കൾ ഊടുവഴിയിലൂടെ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് കേന്ദ്രം നടത്തുന്നതെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സാദിഖ് അലി തങ്ങൾ. കെട്ടിച്ചമച്ച ഭേദഗതിയാണ് കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നും ബില്ലിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുമെന്നും തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള നിയമമാണെന്നും നാളെ മറ്റ് ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സ്വത്തും പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ആരോപിച്ചു. വഖഫ് സ്വത്തുക്കൾ പല ഊടുവഴികളിലൂടെ പിടിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു നിയമമാണ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ കക്ഷികളെല്ലാവരും യോഗം ചേർന്നു ഇതിനെ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. മുസ്ലിം ലീഗും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. മുസ്ലിം ലീഗും അതിനെ എതിർക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെല്ലാം എല്ലാ മതേതര കക്ഷികളും ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ബില്ലിനെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ പാർലമെൻറ്റിൽ എതിർക്കും. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുസ്ലിം ലീഗും അതിനെ എതിർക്കുകയാണ്. വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഇടപെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു നിയമമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ടോട്ടലായിട്ട് മതേതര കക്ഷികൾ മുഴുവൻ അതിനെ എതിർത്തത്. മുനമ്പം ജനതയെ വഞ്ചിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് ഹൈബീഡൻ എംപിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ബിജെപി നേതൃത്വം മാർച്ച് നടത്തുന്നു. കലൂർ മെട്രോ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ നിന്നാണ് മാർച്ച് ആരംഭിച്ചത്. ഹൈബീഡന്റെ ഓഫീസിന് സമീപം പോലീസ് മാർച്ച് തടഞ്ഞു. വഖഫ് നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ നിലപാടെടുത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇടുക്കി എം പി ഡീൻ കുര്യാക്കോസിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് ബിജെപി മാർച്ച് നടത്തി. ബിജെപി നോർത്ത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത്. എംപിയുടെ ഓഫീസിന് 100 മീറ്റർ അകലെ ബാരിക്കേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പോലീസ് മാർച്ച് തടഞ്ഞു. നേതാക്കളായ പി സാനു, പി സജീവ്, PA വേലുക്കുട്ടൻ, ഗീതാകുമാരി തുടങ്ങിയവർ പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. വഖഫ് ബില്ല് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ് മുനമ്പം നിവാസികൾ. 172 ദിവസമായി ആളുകൾ സമരരംഗത്തുണ്ട്. വഖഫ് ബില്ല് തുടർന്ന് നടക്കുന്ന 8 മണിക്കൂർ ചർച്ച എന്നിവയിൽ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് മുനമ്പം നിവാസികൾ. മുനമ്പത്ത് നിന്ന് AT അശ്വതി ചേരുകയാണ്. അശ്വതി, ഈ സൂചിപ്പിച്ചത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. പാർലമെന്റിൽ വഖഫ് ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷയോടെ ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ മുനമ്പത്തെ ജനങ്ങളായിരിക്കും. അവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പ്രതീക്ഷകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ശ്രീജ, ഒരു ചെറിയ സമരമല്ല, 172 ദിവസത്തിലേക്ക് സമരം കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ വളരെ സസൂക്ഷ്മം ഇവർ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. അതിന് പ്രത്യേകം ചില ഫോമുകളുണ്ട്. അതായത് ഓരോ എംപിമാരും എങ്ങനെയാണ്, ഇതിൽ 5 പോയിന്റുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വഖഫ് ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട 5 പോയിന്റുകൾ. അതിനോട് ഓരോ എംപിമാരും എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. അതിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ടോ, ആ ഓരോ പോയിന്റുകളെ ഓരോ എംപിമാരും എതിർക്കുന്നുണ്ടോ, അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ, അത്രയും സസൂക്ഷ്മമാണ് ഈ മുനമ്പം നിവാസികൾ പാർലമെന്റിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളെയും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എംപിമാരുടെ നിലപാടിനെയും നോക്കിക്കാണുന്നത്. അത് രാഷ്ട്രീയമായി പോലും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടിയുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടാ ഇതിനെ? ഇതാണ് ഇന്നത്തെ അല്ല, ഞങ്ങൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി, കാരണം ഞങ്ങൾ 3 വർഷവും 3 മാസവുമായി ഞങ്ങളുടെ റവന്യൂ അവകാശങ്ങളെല്ലാം നിഷേധിച്ച് ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്തോറും നിത്യദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കും അതേപോലെ ഒരു അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഒരു ജനതയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളെ കൈത്താങ്ങായിട്ട് വന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഭേദഗതി ബില്ല്. ഓഗസ്റ്റ് 8-ാം തീയതി ആദ്യം പാർലമെന്റിൽ വെച്ച സമയത്ത് ഉണ്ടാകാതിരുന്നതും പക്ഷേ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ കേരളത്തിലെ 28 എംപിമാരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുനമ്പത്തെ ഈ ദാരിദ്ര്യവും ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന ഈ റവന്യൂ അവകാശങ്ങളെല്ലാം നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദമായി പാർലമെന്റിൽ ആകേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷേ അവരെല്ലാവരും ഞങ്ങളെ കൈവിടിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തെ പോലെ ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പാർലമെന്റിൽ വന്ന ആ നിയമവും ഭേദഗതിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനുവേണ്ടി നിത്യേനയെന്നോണം പരിശ്രമിച്ച അഡ്വക്കേറ്റ് ഷോൺ ജോർജും. ചേട്ടാ, ഇതിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എംപിമാരുടെ ഒരു നിലപാടിനെ, പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ് എംപിമാരുടെ നിലപാടിനെ നിങ്ങൾ? കോൺഗ്രസ് എംപിമാരെ KCBCയും അതേപോലെ CBCയെയും SNDPയുടെ നേതൃത്വവുമെല്ലാം ഈ മുനമ്പൻ ജനത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന അമെന്റ്മെന്റിൽ ബില്ലിന് സപ്പോർട്ടായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ അവരെ ആ വാക്ക് കേൾക്കാതെ ഞങ്ങളെ
പരിഗണിക്കാതെ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളുടെ ഈ തീരജനത്തെ, ഈ 610 കുടുംബങ്ങളും അതേപോലെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ മനസാക്ഷിയുള്ളവർക്കും മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരിയേറെ വേദനയുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ ഈ സമരം വരും ദിവസങ്ങളിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇനി നിയമം പാസ്സായി, ബില്ല് പാസ്? ശരി അശ്വതി, ഇടപെടുകയാണ്. വഖഫ് ഭേദഗതി ബില്ല് പാർലമെന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് മുനമ്പം നിവാസികൾ. അവർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് ഈ ഒരു ബില്ലിനെ കാണുന്നത്. വിവരങ്ങളുമായി ഒപ്പം ചേരുകയായിരുന്നു അശ്വതി. വാർത്തകളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. നമസ്കാരം. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം ഇപ്പോൾ ലഹരിയുടെ പിടിയിലാണ്. കൊല്ലും കൊലയും മാത്രം കണ്ടും കേട്ട് മനസ്സ് മരവിച്ചു. കേരളത്തിനെതിരെ ഏതോ അജ്ഞാത ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ചു, ലഹരിയിൽ അക്രമങ്ങൾ, അങ്ങനെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത വാർത്തകളാണ് ദിനംപ്രതി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്, കാണുന്നത്. നമ്മുടെ യുവത്വത്തെ, ഭാവി തലമുറകളാകേണ്ട കുട്ടികളെ കാർന്നു തിന്നുന്ന ലഹരിയും ലഹരി മാഫിയകളും. പറഞ്ഞു വന്നത് അത്തരത്തിൽ വില്ലനാകുന്ന ഒന്നിനെക്കുറിച്ചാണ്. MDMA, മയക്കുമരുന്നിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ കേരളത്തിലെ വില്ലൻ. എന്താണ് MDMA? ഇത് ശരീരത്തിലെത്തിയാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും? നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. മയക്കുമരുന്നിലെ കാളകൂട വിഷം മുൻപ് അപൂർവമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സുലഭം. മണവും രുചിയും ഇല്ല. MDMA എന്നാൽ മെത്താഫെറ്റാമിൻ എന്ന ചുരുക്കപ്പേര് വിളിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്നാണ്. ലാബുകളിൽ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു രാസവസ്തു. ഈ മെത്താഫെറ്റാമിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുൻപ് MDMA അടങ്ങിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാപ്സൂൾ വിഴുങ്ങിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണമടഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം. മെത്താഫെറ്റാമിൻ അഥവാ MDMA നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക്, അതിപ്പോൾ ആമാശയത്തിലൂടെ എത്താം, അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ, അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണിലൂടെയോ മൂക്കിലൂടെയോ ശരീരത്തിൽ ചെന്നാൽ പെട്ടെന്ന് രക്തത്തിൽ കലരും. പിന്നീട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഹാപ്പി ഹോർമോണായ സിറോട്ടോണിന്റെയും ഡോപ്പമിന്റെയും നിയന്ത്രണം അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കും. ഭയങ്കരമായ ഉന്മാദ അവസ്ഥ, അമിതമായ സന്തോഷം, ഉന്മേഷമൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും. ശരീരത്തിനുള്ളിലെ മസിലുകളെ വലിഞ്ഞു മുറുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 80 മുതലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഡാൻസിംഗ് ക്ലബ്ബുകളിൽ MDMA പോലുള്ളവ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. എന്താണ് ഇതിന്റെ അപകടം? ഉന്മാദാവസ്ഥയിൽ എത്തുമെങ്കിലും അരമണിക്കൂർ മുതൽ 8 മണിക്കൂർ വരെ കഴിയുമ്പോൾ ശരീരം ഇതിനെ നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങും. അപ്പോഴാണ് അപകടം പതുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും വലിയ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകും. കടുത്ത ഡിപ്രഷൻ ഒരുപക്ഷെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് വരെ നയിച്ചേക്കാം. MDMA ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് സന്തോഷം മാത്രമല്ല, വലിയ തരത്തിലുള്ള സങ്കടവും എമ്പതിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം. MDMA ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ദേഷ്യം വന്നാലോ പിന്നെ പറയുകയല്ല, പ്രവൃത്തിയാകും. ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് വെട്ടും കുത്തും കൊലപാതകത്തിലേക്കുമൊക്കെ ഇത്തരക്കാരെ നയിക്കുന്നത്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സമരമിരിക്കുന്ന ആശാവർക്കർമാരെ വീണ്ടും ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ. നാളെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ വെച്ചാണ് ചർച്ച നടക്കുക. ഇതിനിടെ ആശാ സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി കൂടുതൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ രംഗത്തെത്തി. തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അധികമായി അനുവദിക്കുന്ന ഓണറേറിയം താൽക്കാലിക ആശ്വാസമാണെന്ന് ആശാവർക്കർമാർ പറഞ്ഞു. സമരത്തിന് കൂടുതൽ പിന്തുണ നൽകുന്നതിലേക്ക് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ INTUC നേതാക്കൾ യോഗം ചേർന്നു. അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം 14ാം ദിനത്തിൽ നിൽക്കവെയാണ് ആശമാരെ വീണ്ടും സർക്കാർ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചത്. ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് നാളെ വൈകിട്ട് 3-നാണ് ചർച്ച നടക്കുക. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രി വീണ ജോർജ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സർക്കാരിന്റെ മനംമാറ്റം. ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ക്ഷണം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും മുഴുവൻ ആവശ്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ച രേഖാമൂലം ഉറപ്പു ലഭിക്കുന്നതുവരെ സമരം തുടരുമെന്നും സമരസമിതി നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചു. നമ്മളെ 2 തവണ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമായ ഡിസ്കഷൻസ് ഒന്നും നടന്നില്ലല്ലോ. നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡിമാൻഡിനെ സംബന്ധിച്ച് കാര്യമായ ഡിസ്കഷൻസ് നടന്നിട്ടില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും 3ാമത് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഡിമാൻഡ് ചർച്ച ചെയ്ത് ഇത് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങൾ. ഇതിനിടെ 8 ദിവസമായി നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ആശാപ്രവർത്തകയായ അനിതകുമാരിയെ ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് ആംബുലൻസിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. കൂടുതൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടി ഓണറേറിയം പ്രഖ്യാപിച്ച് രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തദ്ദേശ സ്ഥാപന പ്രതിനിധികൾ സമരസമിതി നേതാക്കളെ സമരപന്തലിലെത്തി സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ആശാവർക്കർമാരെ സഹായിക്കുവാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെടുത്ത ആ നിലപാട് വളരെ സ്വാഗതാർഹമാണ്. കാരണം സഹായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനോഭാവം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് അതിനെ തുറങ്കം വയ്ക്കാനുള്ള ചില പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നു? അവർക്ക് സാധ്യമല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു പശ്ചാത്തലം അത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് പരിഗണിക്കണം. അടിയന്തരമായി അത് പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇതിനുവേണ്ടി തുക മാറ്റിവെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതേസമയം സമരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ INTUC തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും വിയോജിപ്പുണ്ട്. INTUCക്ക് പുറമെ CIT ഉൾപ്പെടെ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായേക്കും. നിലവിൽ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന AITUCക്ക് പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നും സംശയമുയരുന്നുണ്ട്. മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇന്നും സമരപ്പന്തൽ സന്ദർശിച്ചു. അമൃത ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം. പാർട്ടി നിർണായക ഘട്ടത്തിലെന്ന് പ്രകാശ് കാരാട്ട്. BJPക്കെതിരെ വിശാല മതേതര കൂട്ടായ്മ വേണമെന്നും പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൽ പ്രകാശ് കാരാട്ട് പറഞ്ഞു. പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് ശേഷം അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ നയരൂപീകരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ അറിയിച്ചു. തലമുറ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് തോമസ് ഐസക്കും പറഞ്ഞു. CPM 24ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് മധുരയിൽ തുടക്കമായിരിക്കുന്നു. KK പ്രശാന്ത് ചേരുകയാണ്. പ്രശാന്ത്, ഈ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് മധുരയിൽ ആവേശകരമായ തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ പ്രധാന അജണ്ടകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഏറ്റവും പ്രധാനമായും പാർട്ടി ആര് നയിക്കും എന്നുള്ള ചൂടേറിയ ചർച്ചകളാണല്ലോ നടക്കുന്നത്. രാവിലെ സമ്മേളന നഗറിൽ ബിമൻ ബസു, മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാവ് ബിമൻ ബസു പതാക ഉയർത്തിയോടെയാണ് സമ്മേളനത്തിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കമായത്. പിന്നീട് സമ്മേളനം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ കോർഡിനേറ്റർ പ്രകാശ് കാരട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇടത് പാർട്ടികൾ, വിവിധ ഇടത് പാർട്ടികൾ, CPI, ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക്, CPM അടക്കമുള്ള വിവിധ ഇടത് പാർട്ടികൾ അതിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരെ അടക്കം ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. അവരടക്കം സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി സമ്മേളനം പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇനി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക്, സംഘടനാ നടപടികളിലേക്ക് സമ്മേളനം കടക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഏറ്റവും CPM സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഈ സമ്മേളനം ചേരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന 3 വർഷക്കാലം പാർട്ടിയുടെ നയരൂപീകരണം എന്നുള്ളതാണ്. ഏത് തരത്തിലായിരിക്കണം സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്, ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും സ്വീകരിക്കേണ്ട നയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നയങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ പാളിച്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, അത് തിരുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ചർച്ച. അത്തരത്തിൽ സംഘടനാപരമായ നിർണായക ചർച്ചകൾ തന്നെയാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിലാകത്തിന് നടക്കുക. പക്ഷേ ഈ സമ്മേളനത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത് നേരത്തെ ശ്രീജ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് പാർട്ടിയെ നയിക്കാൻ ആരെത്തും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. MABയുടെ പേരിന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പ്രഥമ പരിഗണന ഉള്ളത്. കാരണം അത്തരം ചില സൂചനകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. പിണറായിയും MABയും മണിക്കൂറുകളോളം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളടക്കം നമ്മൾ കണ്ടു. സ്വാഭാവികമായും നമുക്കറിയാം, ഇതിനു മുമ്പ് പല തവണ 2 നേതാക്കളും 2 ധ്രുവങ്ങളിലായിരുന്നു. അതുതന്നെയാണ് MABയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിക്കടക്കം തിരിച്ചടിയായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ സംസ്ഥാന ഘടകം ഒന്നിച്ച് MABയ്ക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ പിണറായി വിജയൻ്റെ നിലപാടുകൾ നിർണായകമാകുന്നൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്രയധികം സമയം ഇരു നേതാക്കളും മാത്രമായി ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ചിലതൊക്കെ ഊഹിക്കാൻ പാടില്ലേ എന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേതാവ് തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു. സ്വാഭാവികമായും MABയിലേക്ക് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ എത്താനുള്ള സാധ്യത. പക്ഷേ അപ്പോഴും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം മറ്റ് ചില നേതാക്കൾക്ക് ഈ ചില വിഷയങ്ങൾ, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് പിണറായി വിജയന് മാത്രം പ്രായപരിധി ഇളവ് നൽകുന്നതിൽ ചില സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പുണ്ട്. ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രകാശ് കാരാട്ടിന് കൂടി ഇളവ് നൽകണമെന്നൊരു ആവശ്യം അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ അടക്കം അത് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല തോമസ് ഐസക്കിനോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കുമല്ല, ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രമായി, അത് ചിലരെന്നല്ല ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് സൂചന വരുന്നത്. അതായത് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗമെന്ന നിലയിലും പിണറായി വിജയന് മാത്രമായിരിക്കും ഈ സമ്മേളനം പ്രായപരിധിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇളവ് നൽകുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ MAB എന്ന നിലയിലേക്ക് വരും. പിന്നെയുള്ളത് അശോക് ധവാളയാണ്. നമുക്കറിയാം, കർഷക സമരത്തിലടക്കം അഖിലേന്ത്യാ കിസാൻ സഭയെ വലിയ രീതിയിൽ നയിക്കുകയും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ CPMന്റെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി, അങ്ങനെ ഒരു പേര് കൂടി പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഏതായാലും നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും സമ്മേളനം തുടർ നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുക. ശ്രീജ. ശരി പ്രശാന്ത്. CPM 24ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നടക്കുന്ന മധുരയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു KK പ്രശാന്ത്. തിരിച്ചെത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതോടെ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് അവിടെ വച്ച് ആർത്തവം ഉണ്ടാകുമോ എന്നത്. ഭൂമിയിൽ സ്ത്രീകൾ ആർത്തവ സമയങ്ങളിൽ നേരിടുന്ന പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് പല രീതിയിൽ പരിഹാരങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങ് ബഹിരാകാശത്തെത്തിയാൽ ആർത്തവ ദിനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അവർ അത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്? ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ മൈക്രോഗ്രാവിറ്റിയിൽ ആർത്തവം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് കാര്യമായ ചർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു.
വാലന്റീന തെരഷ്കോവയാണ് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത ആദ്യ വനിത. 1963 ആ ചരിത്ര യാത്ര. പിന്നീട് 1983 സാലി റൈഡ് ബഹിരാകാശ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടർമാർ അവരോട് ചോദിച്ച ആദ്യ ചോദ്യങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്ത് നിങ്ങളുടെ ആർത്തവം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്നതായിരുന്നു. ഭൂമിയിലേതുപോലെ തന്നെ ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്ക് ആർത്തവം ഒരു തടസ്സമല്ല. ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളുടെ സമയത്ത് ആർത്തവം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. പരിമിതമായ ശുചിത്വ സൗകര്യങ്ങൾ, ജലം, മാലിന്യ സംസ്കരണവും പോലുള്ള പ്രായോഗിക വെല്ലുവിളികൾ കാരണം ചിലർ യാത്രയ്ക്ക് മുൻപ് ആർത്തവം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാറുണ്ട്. ജലവിതരണം പരിമിതമായതിനാൽ ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച ജലം കുടിവെള്ളമായും മറ്റും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബഹിരാകാശ രീതി. ഈസ്ട്രജൻ അടങ്ങിയ ഹോർമോണൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവുകൾ കഴിച്ചാണ് വനിതാ ബഹിരാകാശ യാത്രികർ രക്തസ്രാവം തടയുന്നത്. ചില വനിതാ യാത്രികർ ആർത്തവ സമയങ്ങളിൽ ടാമ്പൂണുകളും സാനിറ്ററി പാഡുകളും മെൻസ്ട്രൽ കപ്പുകളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഇവ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം. ആർത്തവം കാരണം പല കാര്യങ്ങളും നീക്കിവെക്കുന്ന ചിലരുണ്ട്. അവരോടായിട്ടാണ് ആർത്തവത്തെ ഒരു തടസ്സമായി കണ്ട് ഒന്നും മാറ്റിവെക്കരുത്. കണ്ടില്ലേ, എല്ലാത്തിനും പരിഹാരങ്ങളുണ്ട്. There is a will, there is a way എന്നല്ലേ? There está aqui nesse momento tua presença é real chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você. എന്തല്ലേ, നമ്മളും പാടും. നമ്മുടെ പാട്ട് കേട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു പോലും ഉറങ്ങാറില്ല. അപ്പോഴാണ് ഈ 10ഓളം വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ ദേ ഒരു പാട്ട് കേട്ട് കണ്ണടച്ച് ഇരിക്കുന്നതോ ഉറങ്ങുന്നതോ. വാളയാർ സഹോദരിമാരുടെ മരണത്തിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ അറസ്റ്റ് ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞു. കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകുന്നതിനും ഇളവ് അനുവദിച്ചു. കേസിൽ പിന്നീട് വാദം കേൾക്കും. മാതാപിതാക്കളെ പ്രതികളാക്കി CBI കുറ്റപത്രം നൽകിയിരുന്നു. കുറ്റപത്രത്തിനെതിരെ മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് നടപടി. അഡ്വക്കേറ്റ് രാജേഷ് ചേരുകയാണ്. രാജേഷ്, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ. മാതാപിതാക്കളെ കേസിൽ കക്ഷി ചേർത്ത നടപടിയും അതിന്റെ തുടർ നടപടികളുമാണ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കുറ്റപത്രം ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പാണ് CBI മാതാപിതാക്കളെ പ്രതി ചേർത്ത് കുറ്റപത്രം കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇനി വിചാരണ കോടതിയിൽ, അതായത് എറണാകുളം CBI കോടതിയിൽ മാതാപിതാക്കൾ ഹാജരാകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കുറ്റപത്രം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഇവരുടെ വിചാരണ നടപടികളിൽ ഇവർ ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്ന് വരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുടർ നടപടികൾ, ഇവർക്കെതിരെ എന്ത് നടപടി എടുക്കണമെങ്കിലും കോടതിയുടെ ഉത്തരവോടുകൂടി മാത്രമേ ഇനി പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വിശദമായ വാദം, അതായത് CBIയുടെ വാദം കൂടി കേൾക്കുന്നത് മധ്യമേലവധി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. രാജേഷ്, ഹൈക്കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാർത്ത കൂടി ചോദിക്കുകയാണ്. പാലക്കാട് ശ്രീനിവാസൻ വധക്കേസിൽ 10 പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചല്ലോ ഹൈക്കോടതി. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കേസിലെ വിചാരണ അനന്തമായി നീണ്ടുപോകുന്ന കേസുകളിൽ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നിഷേധിച്ച് കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിക്കരുത് എന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശമുണ്ട്. വിചാരണ തടവുകാരായി പ്രതികൾ വർഷങ്ങളോളം കഴിയേണ്ടി വരികയും പിന്നീട് ശിക്ഷിക്കാതെ വെറുതെ വിടുമ്പോൾ ഇത്രയും വർഷം അവർ കിടന്ന ഒരു സാഹചര്യം, അവരനുഭവിച്ച ദുരിതം, ഇതെല്ലാം കൂടി അവരുടെ അവകാശത്തെയും കൂടി മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി ഉണ്ടായി. ഈ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് മാനിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ വിചാരണ നീണ്ടുപോകുന്ന, അനന്തമായി അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടുപോകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റപത്രം ഫയൽ ചെയ്ത ശേഷവും വിചാരണ നടപടികൾ നീണ്ടുപോകുന്ന കേസുകൾ, അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകാത്ത സാഹചര്യം, ഇതെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇതിൽ 10 പ്രതികൾക്കും ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ശരി രാജേഷ്. 24 കട്ടുകളുമായി എമ്പുരാന്റെ റീ എഡിറ്റഡ് പതിപ്പ് തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനം തുടങ്ങി. തിരുവനന്തപുരം ആർടെക് മാളിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു ആദ്യ പ്രദർശനം. സെൻസറിംഗ് നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ കൂടുതൽ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് പ്രദർശനം തുടങ്ങിയത്. ചിത്രം റീ എഡിറ്റിംഗിന് വിധേയമാക്കിയതിനെ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ പ്രേംകുമാർ വിമർശിച്ചു. സെൻസറിംഗ് കഴിഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് വീണ്ടും കത്രിക വെച്ചതിനോട് യോജിപ്പില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അക്രമം, കലാപദൃശ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പരാമർശിക്കുന്ന ചിത്രത്തിനെതിരെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് വിമർശനങ്ങളുമായി പ്രമുഖരടക്കമുള്ളവർ രംഗത്ത് വന്നതോടെയാണ് ചിത്രത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ അണിയറ പ്രവർത്തകർ നിർബന്ധിതരായത്. പ്രധാന വില്ലന്റെ പേര് ബജറംഗിൽ നിന്ന് ബൽദേവ് എന്ന് മാറ്റിയ അണിയറക്കാർ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന കാർഡിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പേരും മാറ്റിയിരുന്നു. NIA കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗവും മ്യൂട്ട് ചെയ്തു. 2 മിനിറ്റ് 8 സെക്കൻഡ് ഭാഗമാണ് ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തത്. വളരെ വേഗത്തിൽ സെൻസറിംഗ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയാണ് 24 കട്ടുകളുമായി എമ്പുരാന്റെ റീ എഡിറ്റഡ് പതിപ്പ് തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനം നടത്തുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ആർടെക് മാളിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു ആദ്യ പ്രദർശനം. അതിരുകളില്ലാത്ത ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് കലാകാരന്മാർക്ക് വേണ്ടതെന്നും ചിത്രത്തിന് വീണ്ടും കത്രിക വെച്ചതിനോട് യോജിപ്പില്ലെന്നും ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ പ്രേംകുമാർ പ്രതികരിച്ചു.
എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഈ സെൻസറിംഗ് സംവിധാനങ്ങളോട് അനുഭാവമുള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ. ഈ സെൻസർ ബോർഡിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ പൊതുസമൂഹത്തിനും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതിനകത്ത് ഉള്ളത് ആരൊക്കെയാണ്, അവരുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുസൃതമായിട്ടാണ് ഒരു പ്രദർശന അനുമതി സെൻസർ ബോർഡ് നൽകുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രകോപനം അവർക്കുണ്ടായത് എന്നുള്ളത്, അത് അതിനകത്തൊക്കെ ചില രാഷ്ട്രീയമുണ്ടാകാം. അതേസമയം മോഹൻലാലിന്റെ ഖേദപ്രകടന പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാനോ പ്രതികരിക്കാനോ ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥാകൃത്ത് ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല. റീ എഡിറ്റിംഗ് ആരുടെയും സമ്മതപ്രകാരമല്ലെന്ന് കാണിച്ച് നിർമ്മാതാവ് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂർ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. അമൃത ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം. വഖഫ് ഭേദഗതി ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ച് എംപിമാർ വോട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രത്യാഘാതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് താമരശ്ശേരി രൂപത. ഇത് മുനമ്പത്തെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ലെന്നും ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ സ്വത്ത് തന്റേതാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഒരു പൗരന് വരുന്നുവെന്നും കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് താമരശ്ശേരി രൂപത പ്രസിഡന്റ് ചാക്കോ കാളംപറമ്പിൽ കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എംപിമാർ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്വത്തിന്മേൽ അവർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ഇത് ഇവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ പട്ടയമുള്ള ഒരു ഭൂമി, ആ ഭൂമിയിന്മേൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വഖഫ് ട്രൈബ്യൂണൽ വന്ന് പറയുന്നു, വഖഫ് ബോർഡ് വന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഈ സ്ഥലം ഞങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരാളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നിയമം അനുസരിച്ച് പരാതിക്കാരനാണ് ആ യാഥാർത്ഥ്യം തെളിയിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ വഖഫ് ആക്ട് പ്രകാരം, സെക്ഷൻ 40 പ്രകാരം പരാതിക്കാരൻ ആരുടെ മേലാണോ പരാതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ആ പരാതി പറഞ്ഞയാൾ ഇത് തെളിയിക്കേണ്ട ദുസ്ഥിതിയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ്. ആലപ്പുഴയിൽ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവുമായി പിടിയിലായ യുവതിക്ക് സിനിമാ മേഖലയിലെ ഉന്നതരുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് മൊഴി. സിനിമാ താരങ്ങൾക്ക് രാസലഹരി നൽകാറുണ്ട് എന്ന് തസ്ലീമ മൊഴി നൽകിയതായി എക്സൈസ് അറിയിച്ചു. മലയാള സിനിമയിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് മൊഴി നൽകിയത്. സിനിമാ താരങ്ങളായ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, ശ്രീനാഥ് ഭാസി എന്നിവർക്ക് നിരോധിത ലഹരി വസ്തുക്കൾ നൽകാറുണ്ട് എന്ന് മൊഴി നൽകിയെന്ന് എക്സൈസ് അറിയിച്ചു. യുവതിയടക്കം 2 പേരാണ് പിടിയിലായത്. IPL പഞ്ചാബ് കിങ്സിന് തുടർച്ചയായ 2ാം ജയം. ലക്നൌ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനെ 8 വിക്കറ്റിനാണ് പഞ്ചാബ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ലക്നൌ ഉയർത്തിയ 172 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 16.2 ഓവറിൽ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ പഞ്ചാബ് മറികടന്നു. ഓപ്പണർ പ്രഭ്സിമ്രാൻ സിംഗ്, ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ, നേഹൽ വധേര എന്നിവരുടെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗാണ് പഞ്ചാബിന്റെ ജയം എളുപ്പമാക്കിയത്. ഇന്നത്തെ ഉച്ചവാർത്ത പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. അമൃത ന്യൂസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വഖഫ് നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലിന്റെ അവതരണത്തിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. നമസ്കാരം. സെക്കൻഡ് അത് ഞാൻ പാർലമെന്റിൽ വഖഫ് ഭേദഗതി ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. अगर कहीं अन्याय हुआ है, चाहे दक्षिण में हो, उत्तर में हो, उत्तर पूर्वांचल में हो, पश्चिम में हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पावर्स हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अंडर सेक्शन 97 ऑफ द पेरेंट एक्ट आपके पास पावर है कि कहीं अगर नाइंसाफी हो तो वो आपके पास सेक्शन 97 के द्वारा आप स्टेट बोर्ड को आप डायरेक्शन दे सकते हो. मैं पढ़ूं 97. Directions 96 for the power of the central government to regulate secular activities of Waqf. Powers 97 directions by state government subject to any directions issued by the central government under section 96. The state government from time to time give to the board such general or specific directions as the state government thinks fit. मैं जानना चाहूंगा, आपके बहुत जगह आपकी डबल इंजन की सरकार है, बहुत जगह आपकी डबल इंजन की सरकार है, कहीं कहीं आपकी सहयोगी दल की भी सरकार है. आपने पिछले 10 साल में कितने बार इस सेक्शन 97 का आपने इसका इस्तेमाल किया?
कहीं भी आप अगर नाइंसाफी हुआ तो कितने बार आपने सेक्शन 97 का आपने इस्तेमाल किया, उसका बोलिए, फिर जाके बोलिए कि ये जो पेरेंट एक्ट है ये कमजोर एक्ट है। पूरी ताकत दी हुई है, अगर कहीं गलती हुई है, कहीं सुधारना है, हमारी संवेदना है, वो चाहे केरला में ममम की बात हो, संवेदना है हमारी, पर आपके पास भी वो ताकत है। आपने कितने बार इस ताकत को आजमाया? सर आज आप देखिए कितनी दुख की बात है। सेक्शन 64 क्लॉज 29 64 ये एक्ट सर क्या लिखा है इसमें क्या लिखा है? न्यू एक्ट में सेक्शन क्लॉज नंबर 29L, क्लॉज नंबर 29L में लिखा है कि अगर is a member of any association which has been declared unlawful under the Unlawful Activities Prevention Act 1967, यूआपा आपने लाए, ठीक है, आप कहीं रिगरस प्रेजेंटमेंट को उसको सिंप्लीफाई करके प्रेजेंटमेंट लाना चाहते हैं और कहीं आप यूआपा का संशोधन लाना चाहते हैं, आपका हक है। आप बस हमें इतना बताएं कि और कौन से स्टेट बोर्ड या और कौन से धार्मिक बोर्ड में आपने ये यूआपा का प्रोविजन आप लाने वाले हैं, या सिर्फ ये इसी बिल में है, या सिर्फ इसी बिल में है या दूसरे में भी जो चैरिटेबल एक्ट्स हैं विभिन्न धर्मों के, विभिन्न स्टेट्स के, क्या उसमें भी यूआपा एक्ट आएगा या सिर्फ इसमें? क्या संदेश देना चाहते हैं? किस कौम को आप भ्रमित करना चाहते हैं? बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च का सपोर्ट किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 1926 में ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को खंडन किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। जब आप लोग अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी। किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो जिन्होंने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन की थियरी को पूरी तरीके से नकारा, आप उस कौम पर लगा रहे हो? सर यही है इनका डिवाइड एंड रूल, यही है इनका डिवाइड एंड रूल। बहुत लोग पूछते हैं सर हमारा राष्ट्रवाद क्या है? सर हमारा राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म फॉर अस इज बीइंग यूनाइटेड in our shared love for our Bharat Mata and the mutual respect for her culture, language, dress, food and religion. It is the love for our national flag, the Tiringa, जिसकी सम्मान आपने नहीं की थी. It is the sacrifice of the Indian freedom movement, जिसमें आपने भाग नहीं लिया. It is our thirst for knowledge to seek excellence with limited resources, to be creative, to have the courage, to acknowledge the injustice of the past and have the wisdom to build new bridges. ये है हमारा राष्ट्रवाद और ये राष्ट्रवाद आज हमारे संविधान में उल्लेखित है। तो सर बार बार ये सरकार कहती है ये माइनॉरिटीज के पक्ष में है, लेकिन जब अमेरिका से माइनॉरिटी कमीशन का रिपोर्ट आता है कि माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी होती है तो इनको दुख होता है।
जब यूएस का रिलीजियस कमीशन का रिपोर्ट आता है तब उनको दुख होता है। सर बार बार ये जो ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, ये क्लॉज 42 सेक्शन 108A इन्होंने डिलीट कर दिया है। ये कहते हैं कि कैसे ओवरराइडिंग प्रिंसिपल कैसे आ सकता है। मंत्री महोदय को ओवरराइडिंग प्रिंसिपल से आपत्ति है। पहले सबके लिए सेक्शन 108 क्या है सर पढ़ लेते हैं, आपके लिए भी है, हम तो जेपीसी में थे। और सर जेपीसी में भी सर दुख की बात करनी पड़ेगी सर कि जेपीसी में ये कहते हैं कि सबका इन्होंने राय सुना, लेकिन आपको भी पता है विपक्ष के द्वारा एक भी संशोधन को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये किस प्रकार का, हमने भी बहुत से जेपीसी देखे हैं सर, ऐसा जेपीसी नहीं देखा जहां पर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन भी नहीं हुआ सर, पूरी तरीके से वोटिंग हो गई। एक मिनट माननीय सदस्य इतना ध्यान रखें कि जेपीसी भी संसद का भाग होती है, इसलिए उसका भी ध्यान रखें। सर इन्होंने जेपीसी की बात की, अगर इन्होंने ये नहीं करते कि जेपीसी में बहुत विस्तार रूप से चर्चा हुआ तो मैं भी नहीं करता। इन्होंने उल्लेख किया इसलिए मैं करना चाहता हूं। इन्होंने उल्लेख किया कि बहुत से लोग आए जेपीसी में, सर ऐसे भी लोग आए जिनको वक्फ को लेकर उनका कोई जानकारी भी नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी सर, ऐसे भी आए सर। जेपीसी के मुद्दे हम बार बार हमने स्पीकर को चिट्ठी के द्वारा अवगत किया है, इसलिए हम उठा रहे हैं सर। इसमें 108A ये हटाना चाहते हैं जिसमें पावर टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ओवरराइडिंग का सर, ये आज भी विभिन्न स्टेट एक्ट्स में ये है। तेलंगाना के एक्ट में आज भी ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है, तमिलनाडु के एक्ट में आज भी ये ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है, आज भी आरटीआई एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में 2000 में, नालसा जैसे यूनिवर्सिटी में ये ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है। तो इसीलिए आपको सिर्फ यहां पर आपको ओवरराइडिंग प्रिंसिपल से आपको मुश्किल है, लेकिन जो दूसरे एक्ट्स में जो ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है सेक्शन 108A के द्वारा सिमिलर प्रोविजंस है, उसमें आपको तकलीफ नहीं है। सर मैं भी अपने जैसे इन्होंने हमारे कुछ दोस्तों को सलाह दी, मैं भी इनके कुछ दोस्तों को सलाह देना चाहता हूं। सर क्लॉज 40A सेक्शन 107 जो लिमिटेशन एक्ट जो हटाया गया है सर, आंध्र प्रदेश के एक्ट में ये लिमिटेशन एक्ट ऐसा ही एक लॉ है जैसे पेरेंट एक्ट में है। तो मैं भी इनके आंध्र प्रदेश के सदस्यों को मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रोविजन आपके आंध्र प्रदेश के एक्ट में है, आज वैसे प्रोविजन ये सरकार हटाने वाली है। आपको भी बाद में आंध्र प्रदेश में अपनी जनता को उत्तर देना पड़ेगा। तेलंगाना और तमिलनाडु में हमने बात रखी है सर, तो मैं बार बार मैं कहना चाहूंगा सर, हमें संशोधन से कोई हमें परे नहीं है, लेकिन संशोधन ऐसा हो जो हमें मदद करे। आज डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, आज से 15 वर्ष पहले वामिस एक डिजिटल पोर्टल हमने खोल दिया है। अब ये देखिए सर सरकार की कैसी ये इनकी काम है। डिजिटाइजेशन फिलहाल अभी चल रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, पर माना कि डिजिटाइजेशन वामिस में कुछ खामियां हैं, उसको वामसी में, तो आप उसको ठीक करिए। आप 10 साल से क्या कर रहे थे? आप 10 साल से आप हमसे क्यों ठीक नहीं कर पा रहे? आप वो काम तो नहीं कर पा रहे, अब आप एक दूसरा नियम बना रहे हैं कि दोबारा आप एक नए पोर्टल पे अपने रिकॉर्ड्स आप अपलोड करिए। सर कितने बार हम इस सरकार को अपना कागज दिखाएं? वामसी का अगर इनका काम अधूरा है तो उसको ये काम संपूर्ण करे। अब लेकिन नहीं, इनका काम उद्देश्य यही है कि देश में मसला और बढ़े, और इसलिए आज इस बिल के विरोध में है। ये बिल हमारे देश की अखंडता, ये बिल हमारे संवैधानिक मूल्य, ये देश हमारे अल्पसंख्यकों की सम्मान, ये देश हमारे अमन शांति और सदन और जेपीसी में जिस प्रकार से विचार होना चाहिए था उस सब के विरोध में है। और इसलिए आज पूरा इंडिया अलायंस आज इस बिल के विपक्ष में खड़ा हुआ है। और यही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त देता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया।
रविशंकर प्रसाद, माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया गया है। सर, मैं विपक्ष की बात सुन रहा था, मुझे उनके तर्क को समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। वक्फ बिल में संशोधन होना चाहिए, लेकिन नहीं भी होना चाहिए। ये दोनों तर्क कैसे चलेगा? सबसे पहले बात थोड़ा संविधान की कर लेते हैं। आजकल लाल किताब बहुत घूमती है, जब भी कोई विषय होता है संविधान की लाल किताब दिखाते हैं। सर, हम संविधान की हरी किताब लेकर के आए हैं जो संसद में रखी हुई है, तो मैं इसी को दिखाऊंगा आज। सर, भारत के संविधान के मौलिक अधिकार में धारा 15 है। धारा 15 में लिखा हुआ है कि महिलाओं के साथ कोई विभेद नहीं होगा और सरकार महिलाओं के विकास के लिए कानून बना सकती है। तो अगर यह वक्फ बिल देश की खवातीनों के विकास के लिए, वक्फ में उनकी भूमिका के लिए यह कानून लाया जा रहा है, तो यह कानून गैर संवैधानिक कैसे हो गया भाई? सर, संविधान की धारा 15 में यह भी लिखा हुआ है कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिए सरकार कार्रवाई कर सकती है। यह सच्चाई है। Honorable member, please. मैं जिस प्रदेश से आता हूं, Honorable member, please be seated. Honorable member, सर, जरा लोगों को बैठा please be seated. Honorable member, जरा बैठ जाए। Honorable member, मैं भी आग्रह करूंगा। see the back to the chair. Please be seated. वेणुगोपाल जी, जरा मैं बोल रहा हूं, आप भी सुन लीजिए। मिस्टर वेणुगोपाल, Yes. मिस्टर वेणुगोपाल जी, आई एम स्पीकिंग, काइंडली हैव सम अटेंशन टू मी। बैठिए। सर, मैं ये कह रहा था कि मैं जिस प्रदेश बिहार से आता हूं, वहां बहुत सारे पिछड़े मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश में भी हैं, पसमंदा कहते हैं हम, कई कैटेगरी के हैं। उनको वक्फ के मैनेजमेंट में अवसर नहीं मिलता। और अगर संविधान की धारा 15 के आलोक में इस बिल में इस बात का प्रावधान किया जा रहा है कि पिछड़े मुसलमानों को भी वक्फ में जगह दी जाएगी, उनको जगह दी जाएगी, तो परेशानी क्यों है इनको? और सर, जहां तक सर सवाल है सर, मैं ये बताना चाहता हूं कि संविधान की दुहाई का जवाब मैं संविधान से ही दे रहा हूं। ये वक्फ में जो संशोधन हो रहा है वो मौलिक अधिकार की धारा 15 में उसकी अनुमति मिलती है। अब सर, धारा 25 की बात की गई सर। अब हमारे विपक्ष के उपनेता को मैं सुन रहा था, आपने धारा 25 का जिक्र किया, तो धारा 25 का क्लॉज 2 भी पढ़ लीजिए मेरे साथ। सर, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। नथिंग इन दिस आर्टिकल shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with the religious practice. तो अगर वक्फ की जमीन बर्बाद हो रही है, अगर वक्फ की जमीन लूटी जा रही है, अगर वक्फ की जमीन हड़पी जा रही है, तो संविधान की धारा 25 यह अधिकार देता है कि कानून बन सकता है। तो कृपया करके कोई, अगर आप धारा संविधान की कोट करते हैं तो पूरी की पूरी कोट करें। सर, मैं प्रावधानों पे आने के पहले एक और बुनियादी बात उठाना चाहता हूं। वक्फ के माने क्या है सर? माननीय मंत्री जी ने विस्तार से बताया है। वक्फ इज नॉट ए रिलीजियस बॉडी। वक्फ इज जस्ट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। वो कोई धार्मिक संस्था नहीं है, वो सिर्फ एक वैधानिक संस्था है। सर, दूसरा सवाल आएगा सर,
अच्छा, आप अपने पारी का इंतजार करिए ना। यू आर ए वेरी इलोक्वेंट स्पीकर, आई नो, वेट फॉर योर टर्न। सर, इसी से एक और सवाल उठता है सर, मुतवल्ली की क्या भूमिका होती है? आज मैं चाहता हूं इस बात को सदन में रखूं और सदन के माध्यम से देश में जाए। सर, मुतवल्ली को सिर्फ मैनेजर बोलते हैं सर, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं इस्लामिक लॉ के एक बहुत बड़े स्कॉलर, मुल्ला लॉ ऑफ मोहम्मदन लॉ, इस किताब के मैं 3 लाइन कोट करूंगा सर। मुल्ला प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मदन लॉ, एम हिदायतुल्लाह जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने इसको रिवाइज किया था सर, बहुत बड़े जूरिस्ट थे। और मैं इसके सिर्फ एक पैराग्राफ को पढ़ूंगा सर। पैरा 202, मुतवल्ली, अंडर द मोहम्मदन लॉ, the moment a waqf is created, all rights property pass on the waqif and vested in the Almighty. The mutawalli has no right in the property belonging to the waqf. The property is not vested in him. He is not a trustee. He is merely a superintendent or a manager. तो मुतवल्ली साहब ये 8 लाख की प्रॉपर्टी के खाली मैनेजर हैं, और क्या हो रहा है? तो क्या सरकार खामोश है? अगर वक्फ देने वाले की प्रॉपर्टी लूटी जा रही है तो क्या खामोशी चलेगी सर? ये तो नहीं चलेगी। सर, कुछ और मैं बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं सर इस बहस में, जो उठना चाहिए। ये 8 लाख संपत्ति है, इसमें कब्रिस्तान भी होंगे, इसमें मस्जिद भी होगी सर। आज मैं ये सवाल इस संसद के सामने उठाना चाहता हूं, कितने स्कूल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने अस्पताल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने स्किल सेंटर खुले वक्फ की संपत्ति पर, कितने अनाथालय खुले वक्फ की संपत्ति पर, कितनी बेवा विधवा बेटियों बहनों को सिखाए गए सिलाई कढ़ाई जीने का तरीका, गिनतियों पर भी आएगा सर। तो ये बार बार जो वक्फ की बात बोलते हैं, अगर आज इस कानून के द्वारा वक्फ की जमीन को रेगुलेट करके उसकी प्रॉपर्टी में फंडिंग अच्छी आए और उस जमात के लोगों के लिए इसका विश्वास बढ़े, तो इनको परेशानी क्यों होती है सर? सर, इस परेशानी की मैं वजह समझता हूं सर, और अब मैं इस परेशानी की वजह पर आ रहा हूं सर। दिल से तो कहते हैं कि हम चाहते हैं संशोधन हो, लेकिन राजनीतिक मजबूरी इनके पैर पीछे खींचती है सर। बहुत सालों से राग वही है, सुर वही है, तीखापन वही है, भाषा वही है। और मैं 3 उदाहरण देना चाहता हूं सर। याद करिए, शाबानों के केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि साहबानो एक डिजर्टेड वाइफ थी, उनको कुछ 100 रुपये मिले, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हो हल्ला किया गया। यही लोग हैं। और सर, उस समय राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, 400 का बहुमत था, मात्र एक बेवा मुस्लिम 75 साल की महिला को कुछ 100 रुपये दिए गए, क्या हंगामा खड़ा कर दिया गया। और सर, आज जब मैं शाहबानों पर बात कर रहा हूं सर, तो मुझे अपने दोस्त आरिफ मोहम्मद खान के बारे में कुछ बोलना है सर। वो आपकी सरकार में मंत्री थे, उनका 2 दिन ऐतिहासिक भाषण हुआ था इसी सदन में कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है। एकाएक हंगामा गया, राजीव गांधी हिल गए, डोल गए, कहे तुम वापिस हो जाओ, हम कानून ला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उलटने के लिए। ये भी हमने देखा है ना सर। शाहबानों के बाद यात्रा आती है साराबानों तक सर, 3 तलाक पर। 3 तलाक को लेकर सर इतनी परेशानी थी, मुस्लिम महिलाएं गई थी कोर्ट में। और सर, मैं हाउस में आज कहना चाहता हूं, 2 साल तक इनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं फाइल किया, ताकि मामला लटकता रहे। और आज सर, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि जब 14 में सरकार आई, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे कानून मंत्री बनाया था, तो फाइल आई कि सर का जवाब फाइल करना है, सुप्रीम कोर्ट डांट लगा रहा है। तो मैं गया प्रधानमंत्री जी के पास,
तो उन्होंने कहा जाओ कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर खड़े हो जाओ कि नरेंद्र मोदी की सरकार 3 तलाक की पीड़ित बनों का खड़ी है। सर, आज मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, बोर्ड के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में जब 3 तलाक के मामले की सुनवाई चल रही थी तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि आप फैसला मत करिए, हम एक निकाहनामा बनाएंगे और पूरे देश में घुमाएंगे कि निकाह करते समय 3 तलाक नहीं दोगे, ये शर्त रखोगे। सर याद करिए, कानून बना, इसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे देश में 3 तलाक के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का, उकसाने का काम किया। ये भी, और ये लोग सब लोग खड़े हो गए, सब लोग खड़े हो गए। सर, तीसरा मामला धारा 370 की समाप्ति का, यही बिल आया था ना सर, माननीय गृह मंत्री बैठे हैं ना, हिम्मत दिखाई थी ना, सब लोग एक थे ना। देश टूट जाएगा, देश में आग लग जाएगी। आज 370 समाप्त हो गया, आज कश्मीर का विकास हो रहा है, जम्मू का विकास हो रहा है, पूंजी निवेश हो रहा है। और सर याद करिए, अभी जो चुनाव हुआ है, एक भी बूथ पर रिपोल नहीं हुआ। जो उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है, जहां पाकिस्तानी झंडे लहराते थे, आज वहां लाल चौक में तिरंगा लहराता है और भारत माता की जय बोलते हैं। सर ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? सर ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? सर मैंने 86 से 20 तक की कहानी बताई। स्वर वही है, सुर वही है, तलखी वही है, चाहे संशोधन लाओ वक्फ में, चाहे लाओ 370 में। तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि अब ये नहीं चलेगा, और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। सर एक सवाल उठाने की इच्छा होती है, वोट बैंक के लिए देश कहां तक जाएगा? क्यों जाना चाहिए? सर आप याद करिए, मैं कहना चाहता हूं सीए पर क्या क्या तूफान खड़ा किया गया। आप जो बाहर से हिंदू थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, उनको भारत लाया गया, उसका कोई असर हिंदुस्तान के मुसलमानों पर नहीं था, फिर भी तूफान खड़ा किया गया। और आज फिर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। सर अच्छा जरा आप शांत अरे धर्मेंद्र जी, कभी तो हमको सुन लिया कीजिए। अखिलेश जी सुनते हैं, आप नहीं सुनते, यही समस्या है। सुनिए सर, इससे जुड़ा एक और बड़ा सवाल है सर, और वो सवाल मैं उठाना चाहता हूं। मुस्लिम जमात इस देश के लोग हैं, जितना हिंदुओं का उतना आपका है, कोई शक नहीं है। लेकिन मुस्लिम जमात के आदर्श कौन होंगे? क्या मुस्लिम जमात के आदर्श वोटों की दलाली करने वाले, सौदागरी करने वाले होंगे? अगर ये है तो ये देश को स्वीकार नहीं होगा। हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं, मुस्लिम समाज के आदर्श होंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर APJ कलाम, अब्दुल हमीद, अशफाकुल्ला खान, रसखान, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी। जब मोहम्मद शमी फास्ट बॉलिंग करके आउट करता है, पूरा देश ताली बजाता है। और जब सानिया मिर्जा टेनिस में भारत का नाम ऊंचा करती है, हम सभी खुश होते हैं। ये तय करना पड़ेगा। हमें लगा था कि 25-30 साल के बाद वोटों की सौदागरी कुछ बंद होगी, लेकिन अभी तक बंद नहीं है। कभी तो आप लोग निकलिए उससे बाहर। ये देश बदल रहा है और उनकी संख्या देख रहे हैं। कांग्रेस कहां थी, कहां चली आई? अखिलेश जी देखिए आप। और सर एक बात और मैं आज बताना जरूरी है सदन के स्मृति के लिए। राजीव गांधी को 400 सीट मिली, शाहबानों में वो इन लोगों के सामने झुके। उसके बाद आज तक कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। याद करिए आप, देश की हवा कहां बह रही है समझिए अखिलेश बाबू। और हमको आप इतना आलोचना करते हैं,
नरेंद्र मोदी जी को एक बार पूर्ण बहुमत मिला, दूसरी बार पूर्ण बहुमत मिला। आप लोगों ने संविधान का कुछ मिसलीड करके धोखाधड़ी करके यूपी में कुछ गड़बड़ किया, जनता को समझ में आ गया तो हरियाणा जिता दिया, फिर आपके महाराष्ट्र जिता दिया, फिर दिल्ली जिता दिया और अब बिहार भी जिताने वाले, निश्चित रहिए आप। वो तो पहले जीत गए थे। सर मैं आपसे आज इस बहस के क्रम में कुछ और बड़ी बातें कहने की जरूरत है सर। ये जो 13 का कानून बार बार कहा जा रहा है कि अच्छा लगा मुझे उपनेता ने, कांग्रेस ने कुछ कहा कि बदलाव पहले भी हुए हैं सर आपकी जानकारी के लिए अगर देखें आप, आजादी के बाद 54 में एक्ट आया, 59 में बदलाव हुआ, 64 में बदलाव हुआ, 69 में हुआ, 84 में बदलाव हुआ, फिर 95 में आया। और सर ये रिकॉर्डेड है, अगर आप निर्देश देंगे तो हम प्रस्तुत करेंगे। ये सारा कुछ बदलाव कुछ जमातों के दबाव में आया। और सर 95 कब आया? जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। हाँ, तो इन लोगों ने कहा ठीक है हमारे वक्फ में बदलाव करो। और 13 कब आया? जब इनके हारने का रास्ता खुल रहा था। सर जब आप इस तरह से कानून में बदलाव करते हैं तो आपकी मंशा अक़लियत की सेवा करना नहीं है, आपकी मंशा अपने वोट का इजाफा करने की है। फिर भी आप हार जाते हैं, तो फिर भी नहीं समझते। सर अब मैं किसकी आवाज मैं सुन रहा हूं? अपने प्रदेश की है क्या आप? चलिए, आपके मित्र के बेटी आपके मित्र के बेटी। सर अब मैं कुछ संपत्ति पर आता हूं। ये 8 लाख संपत्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है सर। और सर मुतवल्ली उसको मैनेज करता है, मैंने दिखा दिया, वो मैनेजर है। मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी होती है कि नहीं? और सर मैं पटना साहिब का सांसद हूं सर। हमारे क्षेत्र में गर्दनी बाग में सर एक सरकारी जमीन पर तालाब है जहां लोग छठ में अर्घ देते हैं सर। हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि यह सरकारी जमीन है और वहां से 5-7 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान है, 1920 का रिकॉर्डेड। कुछ लोग कहते हैं ये हमारा वक्फ है, हर बार छठ में खड़े हो जाते हैं। फतवा में यही काम किया। अभी तो सर अभी तो 113 बात की गई दिल्ली की, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जो फोर्ट विलियम है ना कलकत्ता में सेना का कमांड, वो भी हमारा वक्फ है। अब आगे तो कहेंगे कि पूरा हिंदुस्तान वक्फ है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारे सम्राट हुए थे। क्या देश ऐसे ही चलेगा क्या? चल रहा। अरे प्रयागराज में बोला, भोपाल में बोला, कहां नहीं बोला, मुंबई में बोला, जहां चले जाइए। सर ये देश ऐसे नहीं चलेगा। और मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा, एक बार सदन को विस्तार से बताएं जिस तरह से वक्फ का दावा किया गया, उसका दावा करने वाले कौन थे। और थोड़ा गहराई में जाएंगे, हम लोग भी देश घूमते हैं, तो मैनेजर साहब की बिल्डर से साठगांठ हो गई और वहां पर बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। ये सच्चाई नहीं है क्या? वक्फ इसके लिए नहीं होता है। इसलिए ये पूरा बदलाव सर जरूरी है सर। सर मैं एक बात और कहना चाहता हूं इस कानून के संदर्भ में, लेकिन उसके पहले सर हम एक बिहार के बड़े वरिष्ठ नेता को भी कोट करना चाहेंगे। और सर आपसे मैं आग्रह करूंगा, उनका नाम मैं बाद में पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनकी बड़ी विद्वता भरी टिप्पणी थी सर, वो सदन के सामने आनी चाहिए सर, वो बहुत ज़रूरी है। वो उस समय सर पार्लियामेंट में थे और उन्होंने कहा था कि पूरा लूट लिया है, पटना में लूट लिया है, एकदम वक्फ का कानून होना चाहिए। और सर वो नेता जो थे, जो उन्होंने ये बात कही सर, वो हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे। तो मेरे पास उनका कोट है, अगर आप कहेंगे तो निकाल के पढ़ दूंगा। हाँ अच्छा, हाँ
अच्छा मैं लेकर दूंगा सर, किसने नहीं विरोध किया? और आज मैं विपक्ष को एक ही बात कहना चाहता हूं, कुछ तो दिल में झांकिए आप सर। आई विल टेक 5 मिनट्स, आई विल कंक्लूड। कुछ तो दिल में झांकिए आप कि अगर वक्फ की संपत्ति की लूट हो हम खामोश रहें, इसको सख्त करना बहुत जरूरी है। सर एक बात उन्होंने बार बार कही कि पहले हाईकोर्ट को भी पावर था। हाईकोर्ट डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट पावर। हाईकोर्ट चाहे तो कॉल फॉर कर सकता है या कोई कंप्लेन कर सकता है। लॉ में कोर्ट जाना मना था और ट्राइब्यूनल ने कैसे कैसे काम किया ये भी आप जानते हैं। तो आज यहां पर कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। और मैं माननीय मंत्री जी को सलाह दूंगा, मैं 2-3 ट्राइब्यूनल की कहानी जानता हूं, कृपया करके ट्राइब्यूनल ठीक ठाक चले, सिर्फ सेटिंग गेटिंग नहीं हो। ये भी बहुत जरूरी है कि ट्राइब्यूनल में ईमानदारी से फैसला होना चाहिए। सर मैं आपसे इसलिए कहता हूं, ये जो बार बार आज कह रहे हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा, मैं चाहूंगा कांग्रेस के जवाब दे इसको। आज क्रिश्चियन समाज क्यों दुखित है कि वो चाहते हैं वक्फ में बदलाव हो? पूरे भारत के क्रिश्चियन समाज, केरला के क्रिश्चियन समाज, द क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड द चर्चेज आर वेरी वेरी डिस्टर्ब बाय द इंक्रोचमेंट ऑफ देयर प्रॉपर्टी अंडर द गार्ब ऑफ वक्फ। तो उनको लगता है बदलाव जरूरी है। अखिलेश जी आपको भी कभी सोचना ही पड़ेगा, कभी आपको भी सोचना ही पड़ेगा। हा? जिस तरह चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत से क्रिश्चियंस हैं आपके लखनऊ के आसपास, मालूम है ना आपको? अच्छा चलिए सर, 2-3 बिंदु बस देके अपनी मैं बात समाप्त करूंगा सर। नंबर 1, आप इस बिल का विरोध करते हैं तो क्यों करते हैं? इसका जवाब नहीं दे रहे। और मैं चाहूंगा सब लोग मेरी बात पर जवाब दें कि आपको इस बिल से क्या परेशानी है। नंबर 2, क्या आप चाहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी हड़पने, लूटने, दलाली, बिचौलियों के बीच में रहे या गरीबों के लिए काम में आए, पसमंदा मुसलमानों के लिए काम में आए, बेटियों के लिए काम में आए? ये उसके लिए रास्ता खोलता है। और सर तीसरी बात, इस बिल में बड़े बड़े नामी गिरामी मेंबरान पार्लियामेंट, जूरिस्ट, रिटायर्ड जजेस, महिलाएं, सिविल सोसाइटी सब आके देखने वाली हैं। तो आपको शर्मिंदगी किस बात की है? सर एक बात मैं विनम्रता से कहूं, परेशानी किस बात की है? मैनेजर साहब के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मुतवल्ली के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इसी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा अभी, जब आपके इफ्तार में नहीं जाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, संजय जायसवाल समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कहा था इन लोगों ने क्या इफ्तार में नहीं जाएंगे, आपको बुलाएंगे भी नहीं। तो मैं उनसे बड़ी विनम्रता से कहूंगा, आपके वो दिन लट गए तब आप वीटो लगाते थे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, विकास के लिए हर काम करेगी। और बस सर एक अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, बस एक पॉइंट। हमारे ऊपर इन्होंने बहुत आरोप लगाया, एक लगाते हारते जा रहे हैं, फिर भी भाषा वही है। लेकिन सर मैं एक बात कहूं, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो ये बात को हमें गर्व है। अगर गैस दिया तो क्या हिंदू मुसलमान में कोई फर्क किया? अगर शौचालय बनाया तो कहा हिंदू मुसलमान ने फर्क करना है? अगर सड़कें बनी तो क्या ये कहा कि मुस्लिम गांव से सड़क नहीं जाएगी? वोट दो या न दो, हम जब सत्ता में हैं तो पूरे हिंदुस्तान को एक नजर से देखेंगे। सर जिस प्रदेश से हम आते हैं, जहां से गिरिराज जी भी आते हैं, वहां एक बहुत बड़ा चलता है मामला सर, इनने सड़क मत बनाई, यहाँ वोट ना मिल रही है ना? ये हम नहीं करते, हम सबको एक नजर देखते हैं, वोट दो या न दो। इसलिए कभी कभी आप कुछ तो हमसे सीखिए, ये देश के हित में है सर। मैं मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, गृह मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। हम ये बदलेंगे देश के लिए, अक़लियत के लिए, खवातीनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य श्री अखिलेश यादव जी। प्लीज प्लीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
अरे नहीं, आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण और देश के लिए और बड़ी आबादी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक और बिल आया है, क्योंकि मेरे से पूर्व में जो हमारे साथी बोले हैं वो माननीय सदस्य हमारे साथ नहीं, लेकिन मैं उनके बहुत सारी बातों से सहमत हूँ। और अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूँ जो एक्स कांग्रेस वाले हैं वो ज़्यादा बोल रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जो आज बिल पेश हुआ है, मैं हिंदी और अंग्रेजी को जो कुछ समझ सकता हूँ वो यही मैं कह सकता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि ये उम्मीद है। ये उम्मीद कैसे बना है, अंग्रेजी में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उम्मीद है, ये हिंदी में भी समझ में नहीं आ रहा कि ये उम्मीद है। यूनिफाइड वक्फ अध्यक्ष महोदय, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, मैं अकेला काफी हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, मैं समझ सकता हूँ कि मैं वो बात छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है अब। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सदस्य नहीं है यहाँ पर जो हमारे साथी हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात सोशल मीडिया या और जगह गुपचुप हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी कुछ दिन पहले यात्रा जो हुई है वो कहीं 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली यात्रा तो नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, ये जो इस बार जो वक्फ बिल आया है, नाकामी का पर्दा इस बार है वक्फ बिल। और नाकामी कोई एक आध नहीं है, मैं कई नाकामियां बता सकता हूं। अभी मैं माननीय सदस्यों को सुन रहा था, वो पुराने कई बिल उनके बारे में चर्चा कर रहे थे कि कितने प्रोग्रेसिव बिल लेकर के आए हैं। मुझे याद है मैं उत्तर प्रदेश में उस समय था और मुझे लगा कि शायद इनकी वो बात ठीक होगी। एक ये बहुत तैयारी के साथ फैसला लेकर के आए थे और फैसला ये लिया था आधी रात के आज के बाद नोट नहीं चलेंगे, नोट बंद हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, उस नोटबंदी नाकामी के बारे में भी तो चर्चा हो जाए कि अभी भी न जाने कितनी जगह पर कितना रुपया निकला जा रहा है।
कितना निकल करके आ रहा है। केवल नाकामी नोटबंदी की नहीं, नाकामी बेरोजगारी की भी है, नाकामी महंगाई की भी है, नाकामी किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए वो भी इनकी नाकामी है। मुझे याद है एक माननीय मंत्री जी पूरे देश की नदियों के बारे में बीओडी बता रहे थे, लेकिन माननीय मंत्री जी ये भूल गए कि उनके शहर में, उनके क्षेत्र की जो नदी है उसकी बीओडी क्या है। गंगा क्या साफ हो गई, यमुना क्या साफ हो गई, स्मार्ट सिटी क्या बन गई, क्या गोद लिए हुए गांव इन्होंने गोद से उतार दिए, उनकी क्या दुर्दशा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल बना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसके लिए फैसला होना है उसकी बात को अहमियत न देना भी नाइंसाफी है। अध्यक्ष महोदय, नाकामी केवल यहाँ तक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी क्या है, मैं केवल एक पुरानी घटना याद करता हूँ। एक बार फैजाबाद अयोध्या में एक कार्यक्रम था, उसमें बड़ी तैयारी की गई थी और तैयारी के साथ कलाकार मुंबई से बुलाए गए थे। हो सकता है वो सहमति दिल्ली से ना रही हो, केवल लखनऊ की सहमति से हो रहा हो कार्यक्रम। और जब कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो गई, भगवान श्री राम बनकर के कोई आ गया, लक्ष्मण बनकर के कोई आ गया, माँ सीता भी बनकर के कोई आ गया, हनुमान जी, और भगवान हनुमान भी बनकर के कोई आ गया। लेकिन जब लखनऊ से वो हेलीकॉप्टर उड़ा और अयोध्या पहुंचा तो सब लोग थे, लेकिन उसमें हनुमान नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जानकारी करिए कि आखिरकार भगवान श्री राम थे, लक्ष्मण थे, सीता थी, लेकिन हनुमान क्यों नहीं थे? हनुमान इसलिए नहीं थे, शायद उनकी जात या धर्म कुछ और था। अध्यक्ष महोदय, ये देश मिली जुली संस्कृति से चला है। कुछ हमने सीखा, कुछ उन्होंने सिखाया। और जो लोग ये कहते हैं कि हम सबको बराबरी का हक देते हैं, अभी कुछ दिन पहले ईद निकली है। अध्यक्ष महोदय, वो परंपरा रही है, न केवल मैं जाता हूं बल्कि कोई दल का नेता ऐसा नहीं न जाता हो उस कार्यक्रम में शामिल होने। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो भी जाते हैं, उप मुख्यमंत्री, सभी धर्मों के नेता आते हैं। लेकिन पता नहीं इस बार क्या साजिश थी, षड्यंत्र था कि वहां पर कुछ पाबंदी लगी हुई थी। अगर किसी कारण पाबंदी लगी हुई थी तो बात समझ में आती है, लेकिन जब जानकारी हुई है, किसी को नहीं पता था कि पाबंदी क्यों लगी है कि आप नहीं जा सकते वहां पर कार्यक्रम में शामिल होने। क्या यही भारत है, यही संविधान हमें रास्ता दिखाता है? अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बताएं हमें, वो खुद भी माइनॉरिटी हैं, भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलते हैं। भगवान बुद्ध का रास्ता दूसरा है। हम आपको अपना मानते हैं तब भी जब आप हमारे बहुत सारे ग्रंथों को नहीं मानते हैं, तब भी हम आपको अपना मानते हैं। आप हमारे पुराणों को नहीं मानते हैं, आप हमारे उपनिषदों को नहीं मानते हैं, लेकिन सोचिए, हम हिंदू वो लोग हैं जो आपको स्वीकार करते हैं और गले लगा करके चलते हैं। अब मैं दूसरे धर्म पे नहीं जाऊंगा, कोई नाराज हो सकता है। मैं दूसरे धर्म के बारे में नहीं जा सकता, मैं केवल यही बताता हूं। और मैं उत्तर प्रदेश में, अध्यक्ष जी, जहां से आता हूं, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। और ये बिहार के चुनाव में जो आप कह रहे हैं कि महिलाओं को 2 मेंबर बना दिया, इस बार मैं भी देखूंगा आगे भारतीय जनता पार्टी कितनी महिला लोगों को टिकट देंगे वहां पर। अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए।
अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इस बात की कि हमारा धर्म अध्यक्ष महोदय नहीं कुछ कहना चाहते हैं नहीं प्लीज, उनको अलाउ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, कुंभ में आस्था सबकी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी आस्था ना हो। और कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है और लोग निकल पड़े। सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी 100 करोड़ की है, लेकिन तैयारी 100 करोड़ की भी नहीं थी। जिस तरह लोगों की जान गई है वहां पर, सरकार ने खुद स्वीकार किया अध्यक्ष महोदय के 30 लोगों की जान गई है। आज अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं आप कहते टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, जमीनों को हम मैपिंग कर करके डेटा एंड रिकॉर्ड ठीक करेंगे। अध्यक्ष महोदय ये बताएं कि वो 30 लोग कौन थे, उनके नाम क्या थे जिनकी जान चली गई, न केवल जान जाने वालों की, बल्कि अध्यक्ष महोदय ये सरकार बताए कि जो लगभग 1000 हिंदू खो गए हैं, जो अभी तक नहीं मिले, जो अभी तक नहीं खोज पाए हैं, वो 1000 हिंदू की सूची कहां है? और फिर धर्म कारोबार की बात है, जो ये लोग अध्यक्ष महोदय मैं कार सेवक वाली बात इसलिए नहीं छेड़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय ये शायद माननीय सदस्य जानते नहीं कुछ सच्चाई नहीं जानते। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान की वजह से, संविधान को बचाने के लिए, हिंदू एकता को बचाने के लिए कुछ फैसले लिए गए, लेकिन एफआईआर हम लोगों पे नहीं लिखी गई थी। एफआईआर उन पे लिखी गई थी जो बेचारे तैयार हो गए थे सुबह, लेकिन पता नहीं कहां से फोन आया था, कहा था कि अब तैयार तो हो गए हो, लेकिन आप शिलान्यास में नहीं आ सकते। बहुत सही। इसलिए बात को इधर से उधर नहीं में ले जाना चाहता। अखिलेश जी जरा वक्त पे भी आ जाओ। अच्छा, वक्त पे आ रहा हूँ। नहीं, वक्फ पे अध्यक्ष इसलिए आ रहा हूं क्योंकि वक्फ समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। और ये अध्यक्ष महोदय जब ये कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा, अध्यक्ष महोदय धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कारोबार होगा। वो 30 की गिनती में उलझे हुए हैं, जैसे 30 मार खाए वो। उनसे पूछा कि जान कितनी गई, वो 30। उनसे पूछा कि कारोबार कितने का होगा, 30 गुणा 10,000 करोड़। सोचिए, कुंभ हमारा क्या कारोबार की जगह है? और फिर उसका कौन नापेगा, कैसे नालाएगा? और फिर हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जमीन, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, वो भारत की जमीन है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि रेलवे की जमीन भी भारत की है, डिफेंस की भी जमीन भारत की है। क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, क्या रेलवे की जमीनें नहीं बेची जा रही हैं? अध्यक्ष महोदय, केवल यहां तक नहीं, कितना हस्तक्षेप होता है। वक्फ भी भारत के, इसीलिए तो कहीं ना कहीं वक्फ की जमीन से, अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार गारंटी दे कि वक्फ की जमीन कभी भी किसी भी पैतरेबाजी से, किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो,
या कलेक्टर से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो, या वक्फ परिषद या बोर्ड में बाहरियों को शामिल करने की बात हो, इन सब का उद्देश्य मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। ट्रिब्यूनल के निर्णय को अंतिम न मानकर उच्च न्यायालय में लेकर जाने की अनुमति देना दरअसल जमीनी विवाद को लंबी न्यायिक प्रक्रिया में फंसाकर वक्फ भूमि पर कब्जों को बनाए रखने का रास्ता खोलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है न नियत, ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। भाजपा एक अलोकतांत्रिक पार्टी है, वो असहमति को अपनी शक्ति मानती है। जब देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं, तो उसे लाने की जरूरत क्या है जो जिद क्यों कर रहे हैं सरकार? वक्फ बिल का लाना भाजपा की सियासी हट है। वक्फ बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। वो तो आपको काटेगा, और इसलिए काटेगा कि अध्यक्ष महोदय बाहर ये लिखते हैं सत्यमेव जयते, बाहर है लिखते सत्यमेव जयते, भाजपाई अंदर असत्य बात कहते। भाजपा वक्फ बिल लाकर अपने उन समर्थकों का तुष्टीकरण करना चाहती है जो भाजपा की आर्थिक नीति, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चौपट अर्थव्यवस्था से उसे छटक गए हैं। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जब से वोट में गिरावट आई है और खासकर उत्तर प्रदेश में भी, तब से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अपना वोट कैसे संभाला जाए। ये वोट को संभालने के लिए बिल लाया गया है। भाजपा का लक्ष्य वक्फ की जमीनों पर है। इन जमीनों का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर इन जमीनों को पिछले दरवाजे से अपने लोगों के हाथों में दे देना चाहती है। भाजपा चाहती है कि वक्फ बिल लाने से मुस्लिम समुदाय को लगे कि उन पर हक को मारा जा रहा है, वो उद्वेलित हों और भाजपा को ध्रुवीकरण की राजनीति करने का मौका मिल सके। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, भाजपा का लक्ष्य यह है कि ध्रुवीकरण हो, क्योंकि वो जानते हैं कि ध्रुवीकरण जितना होगा उससे वो लाभ उठाने में आगे रहेंगे। तो ये वक्फ बिल जो लाया जा रहा है वो अपनी वोट बैंक को संभालने के लिए और समाज को बांट करके ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया जा रहा है। और अगर इसके लिए नहीं लाया होता तो पहले से जो जितने फैसले लिए सरकार ने, क्या उससे देश और प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव आ गया है? अगर स्मार्ट सिटी का बात करें तो कितनी स्मार्ट सिटी बन गई है आपकी? आपके नोटबंदी की वजह से न जाने कितना रुपया कहां निकल रहा है। और डर तो ये लगता है कहीं भाजपा वाले दूसरों के पैसा रख करके न पकड़वा दें। वक्फ बिल के आने से पूरी दुनिया में एक गलत संदेश भी जाएगा। इससे देश की सेकुलर इमेज को बहुत धक्का लगेगा। वक्फ बिल भाजपा की नफरत की राजनीति का एक और अध्याय है। मैं अंत में कहना चाहता हूं कि अभी तो आपने साथी संभाल लिए हैं, एक साथी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और हमारे जिनका हमने सम्मान किया, हमें कहां ले गए आप? और हमें यहाँ छोड़ गए आप, हमें छोड़ गए। हमें देखिए सभापति महोदय देखिए राजनीति क्या है। हमने आपका हाथ पकड़ा और हम यहाँ आ गए, और आप हमारा हाथ छुड़ा करके वहां चले गए। इसलिए देखिएगा कब हमारा इनका हाथ मिल जाए। और मैं अध्यक्ष सभापति महोदय ये कहना चाहता हूं कि वक्फ बिल भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा, क्योंकि ऊपर से तो हाँ हाँ कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी सहमत नहीं हैं। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए हैं, कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है
कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। बंटवारा तो पीडीए करेगा। अभी देखिएगा सभापति महोदया, हमारे एक सदस्य कह रहे थे कि चुनाव बहुत अच्छा होता है। इनसे बेहतर किसने चुनाव देखा होगा? चलिए धन्यवाद। वोट ही नहीं डालने दिया। चलिए सभापति महोदया, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं और अपने दल और साथियों के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी इस बिल का विरोध करती है। वोट पड़ेगा तो हम इसके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। माननीय सदस्य श्री कल्याण बनर्जी जी। Thank you, madam. On behalf of All India Trinamool Congress, under the leadership of the Mamata Banerjee, I strongly oppose the bill in entirety. Madam, the spirit of my speech is, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा. Madam, this present bill covers importantly two areas of the Waqf. One, manage religious affairs of Waqf board. One of the arena is to manage, control, supervision of the religious aspects of the Muslim. Two, providing power to the state government to decide the disputes in respect of the Waqf property, including land and building. Article 26 of the Constitution of India provides that, subject to public order, morality and health, every religious denominations or any section thereof shall have the right, A, to establish and maintain institutions for religious and charitable purpose, B, to manage its own affairs in matter of religion, C, to own and acquire movable and immovable property, D, to administer such property in accordance to such law. Madam, the Waqf is an institution for religious and charitable purpose. The Muslim have constitutional right to manage its own affairs in the matter of religion because Waqf property belongs to Allah. They have also the right to administer such property. The purpose of the bill is a clear breach of the right of the Muslims to perform their religion duty, to manage their religious affairs, and therefore completely in violation of Article 26 of the Constitution of India. The bill hits basic structure of the Constitution. Madam, under Article 246, sub-Article 1, the Parliament has an exclusive power to legislate a law under 7th schedule of List 1, and under Article 246, sub-Article 3, the state is having the power, state legislature is having the power to legislate the law, exclusive power. Sir, excuse me, sir. Sorry. That is to say, land comes under List 2, under entry 18 of the state lists. Lands and buildings vested in or in the possession of the state comes under entry 35 of the List 2 of the state list. In the proposed Waqf bill, the Parliament has no power to legislate any law in respect of the land and building vested in possession of the state in respect of the Waqf property, because the state is only having power to legislate such law. Therefore, the Parliament is now encroaching upon the power of the state legislation in deciding the question of the land and building of the Waqf. Thus, it is completely unconstitutional and divorces the Article 246, sub-Article 3 of the Constitution of India. This is also hits the basic structure of the Constitution. By exercising any power under List 1 or List 3, state legislative power under List 2 cannot be encroached. There is a difference between a Waqf recognized by the Muslim law and religious endowment and recognized by Hindu law on the one hand and public charitable trust as contemplated by the English law on the other. The question has been considered by the Privy Council. In Vidya
Bharuti Tirtha versus Bulsami Ayar. Long before. Mr. Amir Ali, who delivered the judgment of the board, observed that it is to be remembered that a trust in the sense in which the expression is used in English law. When the gift is directly to an idol or a temple, the season to complete the gift is necessarily effected by human agency. Called by whatever name, he is only the manager or custodian of the idol or the institution. In no case is the property conveyed to or vested in him. Similarly, that is a basic difference. The Honorable Minister, he was speaking about the Hindu trust. The Muslim law relating to trust differs fundamentally from the English law. Hindu trust follows English law. Muslim law doesn't follow English law. That is a basic difference. Mr. Amir Ali said the Mohammedan law owes its origin to a rule laid down by the Prophet of Islam and means the tying up of a property in the ownership of God the Almighty and the devotion of the profits for the benefit of the human beings. As a result of the creation of a Waqf, the right of the Waqf is extinguished and the ownership is transferred to the Almighty. It is religious. If it is religious, comes within the ambit and scope of Article 26 of the Constitution. The manager of the Waqf is the Mutawalli, the governor, superintendent, curator. But in that capacity, he has no right in the property belonging to the Waqf. The property is not vested in him and he is not a trustee in the legal sense. Therefore, there is no doubt that the Waqf to which the Act applies is essentially features different from the trust as is known to English law. In Sairabanu versus Union of India, 2017, volume 9, SCC, page 1, the Constitution bench held that any legal provision should be made with the application of known principles of law. If any decision is taken without supporting principles of rule of law, it becomes unpredictable and such a decision is antithesis of a decision taken in accordance with the rule of law. This proposed bill is just contrary to the well-settled principles of law which is established in the country by judgments have been pronounced not only by the Privy Council, by the Supreme Court of India also. Madam, the various provisions of the Waqf Amendment Bill 2024 is manifestly arbitrary and therefore cannot be passed by the Parliament itself. The Waqf system in Islamic tradition stands as a testament to the enduring values of charity, community, welfare, spiritual dedication rooted in the principles of Sadaqat Jariyah. Waqf in India, Waqf properties form the backbone of the Muslim communities, social, cultural and religious life, playing a pivotal role in maintaining their collective identity. This endowment sustains mosques, madrasas and cemeteries while providing essential resources to marginalized section of society, especially in an environment where minority communities often struggle for equitable access to public purposes. This is not there. Equality, equitable access is not there in case of the Muslim. That is the reason we are opposing. Over the years, excessive government oversight has raised concerns about the erosion of the autonomy and sanctity of Waqf, which under Islamic law is intended to function independently, to serve its religious and charitable purposes. At the heart of the Waqf system administration lies the State Waqf Board, while act as custodian of Waqf properties, ensuring their proper management and alignment with the purposes by Islamic law. These boards have consistently worked to protect Waqf properties from the mismanagement. Madam, the Waqf was centrally first introduced in 1953. Mr. Riju, the Honorable Minister has said, thereafter so many acts, then 1995 Act has come, Amendment 2013, now it is coming. Now by introducing Clause 2, the title of the Act has been amended, Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development. There is no rational basis to make such amendment of the title of the Act.
Every act is intended to make the act more efficient and development purposes. As for example, the Companies Act was enacted in 1956, thereafter reenacted in 2013. The act was brought to regulate the management, empowerment, efficiency and development of the control of the companies. The Waqf Act 1995 had various provisions for management, empowerment, efficiency and development. Therefore, the said proposed amendment to the title is wholly unwarranted. The title, which is being used nearly for 75 years, has no necessity to be amended unless the government wants to have the satisfaction that something new has been done. The proposed amendment to the Waqf Act, which includes a tacit attempt to alter or dilute the historical and religious significance of the term Waqf, is deeply concerning and warrants strong objection. The term Waqf is not merely legal or administrative level. It is a sacred concept deeply rooted in Islamic tradition and jurisprudence. Why you are taking away this? Madam, they want to interfere in. please, Sogada, please. The historical development of Waqf legislation in India, from the Bengal Waqf Act 1934, Uttar Pradesh Muslim Waqf Act 1960, the Waqf Act 1954, and the subsequent unification under the Waqf Act of 1995 has always retained the sanctity of the term. These laws, while designed to provide statutory governance, have consistently respected the essence of Waqf as a concept grounded in Islamic law. Madam, insertion of clause 2A. Insertion of clause 2A tantamount to nullify and all earlier judgments, degree and orders of any court in respect of the Waqf and the trust. This attempt is basically taking away the rights of the Muslim, which they have accrued. Any attempt to nullify the Supreme Court judgment by legislative process is illegal and unconstitutional. Clause 3 Roman 9 of the proposed bill that said various sects and subsects have been created. This attempt to create subsect without having any rational object is not a good sign for any religion, caste or creed. If the constitutional provisions empowers the parliament to create caste, subcaste or subclass, only then the parliament can do so. Like the scheduled caste created inside Hindus, but the constitutional provision does not empower the parliament under the guise of the Waqf Amendment Bill 2024, create Aga Khani Waqf, Bora Waqf, etc. The intention to legislate such kind of classification of Waqf board based on subsects, the ruling party in the government is having evil intention. If the title speaks about unification, creation of various Waqf board on the basis of subsect itself creates a de-unification between the sects and subsects of the Muslims. Madam, clause 3FA of the said proposed bill defines government organization including municipalities and panchayat and autonomous bodies of the state and central government to a part 9A of the constitution. Under the scheme of part 9A, the municipalities and the panchayats are self-government and autonomous bodies. How the properties of the self-government bodies can be treated as a government properties, madam? In a constitutional provision it has made it. By now, by this law, panchayat and municipality has been described as a government properties. It is not a government properties, local self-government bodies. Therefore, there is a distinction. Therefore, this provision is bad. Madam, introduction of definition of the government property seems to be mischievous. Why Waqf will be allowed to define government property? This is an attempt to legalize illegal occupation or Waqf property by government organizations. Another sin is there. In our JPC, we have said repeatedly, give us the data what the government has occupied the property. Nothing is there. And in Rajasthan, it is a case, is extreme cases. 80% of the property of the Rajasthan, Waqf property has been occupied by the Rajasthan government itself. Practicing Islam for at least 5 years,
is a precondition for making Waqf is thoroughly unreasonable, irrational and manifest arbitrary. Under the scheme of the Constitution of India, no person can be compelled to practice his own religion. If no person can be compelled to practice his own religion, then such persons cannot be debarred either to offer his property to God or whether he is Hindu or Muslim or any other religion. Practicing religion means day-to-day performance of his religious duty. In a secular democratic country like us, no one can compel to perform any religious duty. If such a provision cannot be made either in the Constitution or in any other statute, no mandatory provision can be made for practicing Islam for at least 5 years for making Waqf. Even if I discharge my religious duty on my own at any place, I cannot be compelled to speak whether I am performing religious duty or not performing the same. Who is anyone can ask me whether I am performing religious duty or non-religious duty? Is it not a violation of a constitutional right? What the Constitution has given you the power to say, to ask me the question, I am discharging religious duty or not discharging the religious duty? A man can believe in performance of religious duty at any point of time of his life, any point of time, before death even. Performing of a religious duty cannot be the basis belonging to that religion. Even in a Hindu mandir which is governed by an act, like Puri Jagannath Temple or Kashi Vishwanath Temple, there is no such provision that any person practicing Hindu for at least 5 years and then only can donate anything to the deity. Madam, I can't donate. If I want to donate, it's my choice. How my choice can be controlled? I can donate to Hindu mandir. I donate to everywhere. I donate in Hindu mandir. I donate in Muslim property. I donate in the Christian property. I donate in the Buddhist property. I donate everywhere. I donate Vegas. I donate everywhere. How can you control this act? How can I control? By reason of insertion of this clause, no other person of a religion can make over any property to Waqf. The proposed amendment is thoroughly misconceived, arbitrary, irrational, and therefore violates Article 14 of the Constitution of India. Under Clause 3, Roman 9b, existing Clause 3R1 has been omitted. That means Waqf by user is being taken away. Waqf by user is a long-standing practice of Muslims. In our country, Waqf by user is a very common practice, and decades after decades, rather time immemorial. Waqf by user is a practice. The concept of Waqf by user was recognized in our country in the case of courts of words for the property of Magdam Hassan Baksa versus Illahi Baksa and others, 1912, SCC online, page 45. Madam, the Honorable Apex Court in the matter of Sayyid Muhammad Salih Labbai, dead by Eller and others versus Muhammad Hanifa versus Eller and others, 1976, 4 SCC 780. In paragraph 34, 36 and paragraph 39, categorically accepted this Waqf by user. The necessity is necessary in case of prayers offered in congregation. A single Muslim can also offer his prayers with or without an imam, but if prayer is in a congregation of a Jannat are offered only behind an imam who leads the prayers. And Islam is an extremely modern and liberal religion. There is no question of any person being denied admission in a mosque for the purpose of offering prayers, and that is why the law is so strict that the moment a person is allowed to offer his prayers in a mosque, the mosque becomes dedicated to the public, and therefore it's an Waqf property. Therefore it is an Waqf property. Finally, it is not necessary for the dedication of public mosque. Thus, Madam, in that judgment it has said, so that when a person erects a building with the object of dedicating it as a mosque and permits people to offer prayers therein without declaring that he has constituted it into a mosque and prayers are offered, there bil jammat, the mosque becomes irrevocably dedicated. It is dedicated. Madam, I just give you one instance. In the Raishina village, where the residence of the President of India is there, it was a long back, it's a big village.
In the big village, there are so many Muslims are there. One Hindu dedicated his property for offer their namaz, and that is the property, that is the mosque is in front of the parliament. In the front of the parliament. Who has not come here? All Abdul Kalam Azad, so all important political leaders, including Bhutto, and the Imam of that is sitting here as one of our colleague, member of parliament. If prayers are offered once in a mosque, it is sufficient to constitute a good dedication. Dedication has been clearly said. Paragraph 39 of the judgment, that the founder must declare his intention to dedicate a property for the purpose of mosque. No particular form of declaration is necessary. The declaration can be presumed from the conduct of the founder, either express or implied. If this is the principle of law, is long-standing in our country, how can you say today you have to register Waqf by user? You have to give a declaration. I don't need to. Therefore, you are trying to buy this bill. You are trying to take away the basic reason of all the judgments of the Supreme Court. This is not correct and this is bad. Madam, neither a document nor express words are essential for dedication of religious or public purpose in our country. Such dedication may be implied for user, permitted for public and religious purposes for sufficient length of time. The conduct of those properties is presumed to be dedicated for religious. It has been said by C. B.K. Mukherjee on Hindu law. C. B.K. Mukherjee on Hindu law of religious and charitable. I do not think that anyone in India is here now. Or today, in India, there is anyone who understands Hindu law better than the B.K. Mukherjee. No one. He has said so in his book. Anyway, new concepts, smart mans have come, like a smartphone. Therefore, everything is being done. In the case of M. Siddiqui, through Elas versus Mahanath Suresh Das, 2021 SCC page 1, it has expressly said Waqf by user. Our jurisprudence recognizes the principles of Waqf by user, even absent an express deed of dedication. This is being taken away. Now, long judgment I will not read. This is being taken away by this. Therefore, it hits the basic things. Clause 3, subclause 5 of the said proposed bill. The verbal declaration of Waqf has been taken away. This is contrary to the history of creating Waqf by any individual. Several properties are dedicated as Waqf by a good number of persons to be made as Waqf property. Madam, the deletion of the word either verbally or violates the right of the Muslim as protected under Article 25 and 26 of the Constitution. Therefore, it hits the basic structure of the Constitution. In Commissioner of Police versus Acharya Jagadish Abbuddhota 2004-12 SCC 770, it comes from our state. When CPM was in a power, they killed Ananda Margis. In that case, this judgment has come. The protection guaranteed under Article 25 and 26 of the Constitution is not confined to matters of doctrine or belief, but extends to act done in purpose of religion, and therefore contains a guarantee for rituals, observances, ceremonies, and mode of worship which are essential or integral part of religion. What is Waqf then? It's an integral part of the religion. Madam, essential part of religion means the core beliefs upon which a religion is founded. Core belief of the Muslim is that Allah is there. I am dedicated my property to the Allah. Therefore, it's an Waqf property. It is upon the consensus essential power practice that the superstructure of religion is built, without which religion will be no religion. Madam, nobody can say that essential part or practice of one's religion has changed from a particular date or by an event. The proposed amendment clause 3 proceeds with the assumption that Waqf are riddled with the issues of mismanagement. It appears that primary basis of the assumption, very important, the very primary basis of the assumption is the quantum of pending litigation surrounding Waqf. If the basis of identifying body
as mismanaged in the amount of litigation that is pending against in this cannot be a rational basis of determining the standard of management of a body. In fact, the Honorable High Court of Delhi in the case of Union of India, Kiran Manua, he has given the details of the pending cases. If pending cases are the ground for bringing the legislation, now I tell you the figure, statistics. In the pending civil cases in Supreme Court, 64,687. Pending criminal cases in Supreme Court, 18,235. Total pending cases, 82,922. And in Waqf, all over India, 14 to 15,000 cases are pending. If it cannot be said to be a basis. Madam, Section 3A, the clause creation of Clause 4, Section 3B, insertion of section that mandates that every Waqf, prior to the commencement of the shall file the details of the Waqf property dedicated to Waqf. I have already dealt with that. Madam, the Waqf board under its main statute has declared a property to be Waqf in the case that the government has to challenge the same before the appropriate court of law. Oh, sorry. Madam, this is a very important, sorry I have missed it. Now the property, government property, according to Minister, the state government officer above the district magistrate will decide the issue. How it can be? How the state can be judge of its own cause? State will decide, this is my property and it will be binding. And the problem is this, the moment it will be claimed, it will not be treated as a Waqf property. Madam, title of the land only can be decided by the civil court, not by anybody. And this title, this land, the power which has been given to decide the land, whether it's a government land or not, that is covered by the state list under entry 18 and entry 35. That is the list 2 of the 7th schedule. Parliament has no power to legislate law in respect of that. If the Waqf board under its main statute has declared a property to be Waqf, in this case the government has to challenge the same before the appropriate court of law. By amending this law, this cannot be done. A person cannot be judge of his own cause. It has to be gone to the civil court. It is well-known principles. Everyone knows about it, that it is with a dispute on the civil law and is there. Who will decide? It will be decided by the civil court. The proviso itself indicates the predetermined mind of the government. Then the Waqf board itself is a statutory body. 3C4. If there is any wrong writing in the records of the Waqf board, that can be challenged by the government in accordance with law. The government cannot direct the Waqf board to make the correction. This itself is hit by the doctrine of dictation. Madam, apart from the survey, there are currently the Honorable Supreme Court time and again reiterated. Survey records, they are mostly relying. Madam, the Honorable Supreme Court time and again reiterated that revenue records are not documents of title and they do not vest the right of ownership as a property to the individual named in the land record. References, so many references is there. This is an elementary thing. Any law student also know this branch of law. Unfortunately, this has not been taken care of by the central government. Clause 5E, the proposed amendment amounts to create subclause amongst the Muslims for the purpose of giving birth to give this dispute. Clause 9 of the proposed bill. Proviso to clause 9 is totally unacceptable and it provides 2 members appointed under the subsection shall be non-Muslim. The exclusion of Muslim community persons from holding the post of 2 members in the Waqf board is hit by Article 14 of the Constitution of India, which provides equal opportunity to everyone. In the case of Hindu temples, the non-inclusion of Hindus cannot be imagined. We can't imagine. For example, under Section 6, subsection 2(1) of Uttar Pradesh Kashi Vishwanath Temple Act, it has been specifically mentioned that there are 3 eminent Hindu scholars well versed in the Hindu. A line has been set, a point has been taken to see these are the state law, but it is a central law. Law means within the ambit of Article 246 of the Constitution of India. Law doesn't mean beyond that 246. If a law is within the Article 246 of India, there cannot be discrimination between a state law and central law. This is kind of unthinkable stand has been taken. I cannot think about this.
After long 44 years practice, I can't think. No, it's a state law. It cannot be compared with the central law. What is that? Law. Law is having its own force. Read Article 13 of the Constitution of India also. What is law? Madam, Clause 11 of the proposed bill seeking amendment of Section 14. That is amendment of original act suffers from same illegalities. Clause 14 of the proposed bill whereby Section 20A of the original act, that is removal of the chairperson by vote of no confidence, has been deleted. Such deletion is also improper, illegal, because if the chairperson does not enjoy the confidence of the other members, how can he sit there? It's a question of democracy. If the chairperson does not enjoy, madam, can you sit there if you don't enjoy the majority's confidence? If you cannot enjoy the majority's confidence, you have to leave. That is the democratic setup in our country. Madam, amendment of Section 36, subsection 3 is effectively taking away the power of the Waqf board. Regarding receiving of registration of Waqf, and such amendment has been empowered the central government in an indirect manner to control everything. All powers have been taken. Why you are not making it, the Honourable Minister? The Minister of Minorities will decide everything. He will be the supreme. Nothing is required. Finished. You can do it. Clause 20 of the bill amending of Section 40 of the original act. If Section 40 is deleted, madam, the Waqf board power itself will be teethless doll. If Section 40 is amended and Section 40 is taken away, the Waqf board will be a teethless doll only. If Section 40, then there is no necessity to keep the Waqf board itself. Do not keep it. Keep the power with the minister of the central government. Minister will decide what is the necessity of the Waqf board. Everything will be done by him. Because the power to regulate and statutory Waqf board. This is complete. Madam, I will take some time, please. Complete reason I am reading very fast. I am going very fast. Waqf board. The proposed amendment bill under clause 21 seeking amendment of Section 46 of the original act once again empowers the central government to make regulations with respect to so and so. Therefore, state power has been taken away. Does it not violate the federal structure of this country? Every power of the state government has been taken away. Only central will do it. That cannot be. It violates the fundamental character of the Constitution. Clause 22 amendment Section 47 of the Act. The proposed amendment empowers central to call for the audit of any Waqf board by the CAG. How the CAG can make an audit? CAG can make an audit in a case of consolidated fund. CAG can make an audit in a consolidated fund under the Constitution. How CAG can make an audit beyond the consolidated fund? This is absolutely illegal and improper. Madam, Section 50, under the existing provision of the Waqf board, then comes Section 83. By the proposed amendment, the members of the tribunal has been reduced to 2 and 1 person having knowledge of Muslim law. This has been done, it has been amended. Now the tribunal to order is tribunal to High Court. Tribunal to High Court under appeal. Now it is a statutory appeal. There is no provision for condonation of delay if there is any delay is done. If a direct is a statutory appeal, you have not given any power to grant any interim relief to the persons. How can be an adequate remedy? Earlier it was there, one could have gone on Article 226 of the Constitution for a judicial review. And High Court is having the power to condone delay and also to pass an interim order. This power you have also taken away. Therefore, this provision is not an adequate remedy so far the Waqf property is concerned. Madam, please. Madam, the High Court has not given any power. Madam, 107 and 108. I am going very fast. I am getting very fast. I am not taking even the water even. The proposed amendment has an effect on the decision to replace the survey commissioner. Then the under clause proposed to section 107 of the act is deleted and thereby non-applicability of the limitation act. That is divorce. How the limitation act will be applied? If the limitation act will apply, so many disputes will come. This is the intention of the government.
ओपन, सब खुलो अभी खुल दो रास्ता, इंडिया में चला लगा दो, हिंदू मुस्लिम लगा दो, यही तो इंटेंशन है उन लोग का। क्या होगा? This is not correct. This is completely bad. The proposal Waqf proposes significant. In Hemant Wajid sir has also criticized the concept of adverse possession as unjust, urging reforms to protect rightful property. Therefore, this is a clear attempt. This is a clear attempt on the part of the bill to curtail the right of the Muslims in our country. ये ठीक नहीं है मैडम। हिंदू या मुस्लिम का हसद मत छड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजामी लगभग में मत छड़िए मैडम। हम अपनी जान का दुश्मन के अपना जान कहते हैं, मोहम्मद का इस मिट्टी के हिंदुस्तान कहता है। अब तो मजहब अब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया है। थैंक यू मैडम। माननीय सदस्य श्री ए राजा जी। Madam Chairperson, thank you for the opportunity given to me to express my views on behalf of the DMK party. I have received the courageous speech of Honorable Minister with rapt attention, and I wondered where he got such a courage to explore the entire cock and bull stories in the Parliament. Sir, Madam, I dare to say the Honorable Minister, please go through your speeches tomorrow by text. Compile the text and do tally with the JPC report and the documents submitted with the JPC. If it tallies, I will resign from this house. You recall your memory. When you introduced this bill, you said what prompted to introduce this bill. One of the classical examples that has been given by you, the reason for this bill to be piloted, when you introduced, in Tamil Nadu, in Tiruchirappalli district, entire village, running thousands of acres, were described as Waqf property. JPC came into Tamil Nadu. The district collector came to depose evidence, and the secretary of the revenue department came to the evidence. CEO of the Waqf came to evidence. All three officers came to JPC. The chairman is sitting here. Deposed the evidence. The cock and bull story that has been built by you and expressed by you has been demolished. In spite of the cock and bull story, no interference. No interference. Having said the cock and bull story, now we are coming at new cock and bull stories to say the Parliament was given to Waqf board. Sir, madam, the irony is that the minorities' rights are going to be protected by way of this bill, where the party is having no members of Parliament Muslim community. There is no Muslim MP to introduce and pilot the bill and support the cause of the bill. They are not able to produce a single member of Parliament, and they are giving moral advice to us how the secularism can be protected. Madam Chairperson, today it is a remarkable day for the Indian Parliament to design our destiny, whether the country is going to travel, whether the secular country is going to travel in the path which was well beaten by the forefathers of the freedom fighters on the Constitution, or a negative path as decided by the communal forces in the country. Sir, I want to start my speech by quoting the Tamil Nadu Assembly
passed a resolution. The resolution was moved none other than the Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin. The resolution unanimously passed. The stand of the court, our stand, the Waqf bill introduced by the Parliament against the minority rights, against religious freedom, unconstitutional, contrary to the purpose of Waqf, inconsistent with judicial findings, unnecessary and confusing. If passed, it will cripple the Waqf institutions and harm the Muslim community. Therefore, the Assembly urges Union Government to completely withdraw the Waqf Amendment Bill. Unquote. Madam Chairperson, is it not a paradoxical question that the political will, sovereign will of the entire country seems to be or deemed to be reflected in this house, whereas Tamil Nadu political will reflected in the state assembly is something not only inconsistent, completely diametrically opposite. This difference and diametrically opposite component is not going to be accepted by you, then there will be a question for integrity of this country. Please note it. Madam Chairperson, I want to take back the House in the year 1949, soon after the independence, when the Constitution was made, the Constitution making process was on. Of course, you will be happy that your own favorite leader, the Iron Man of this country, Sardar Vallabhbhai Patel, favorite leader of the government, they are celebrating with false claims. However, I want to put forth my views from the mouth of Sardar Vallabhbhai Patel, who was the chairman of the advisory committees for minorities in the Constitutional Assembly. He was the chairman. Who are all the members? President of India and President of the Assembly, Rajendra Prasad, Pandit Jawaharlal Nehru, later Prime Minister, Dr. Ambedkar, and Dr. Munshi. Headed by Sardar Vallabhbhai Patel, the committee took a decision and a report was placed before the Constitutional Assembly. The Constitutional Assembly report was placed on 25th May 1949. He himself says, I quote, a committee of 5 persons was appointed by the advisory committee in which our revered president was also one of the members. Pandit Jawaharlal Nehru, myself, Mr. Munshi and Dr. Ambedkar were the members of the committee. The committee met and made its report in February. Unquote. Finally, he placed the report and moved in the Constituent Assembly. What was his prayer when he was moving? I quote again. If they, that is Muslims, I quote, if they really have come honestly to the conclusion that in the changed conditions of this country, it is in the interest of the all to lay down real and genuine foundation of a secular state, then nothing is better for minorities than to trust the good sense and sense of the fairness of the majority and to place confidence in them. First part, unquote. Second part is very important. Again I quote, so also it is for us to happen to be the majority to think about what the minorities feel and how they are treated. But in the long run, it would be in the interest of the all forget that there is anything like majority and minority, this country and that India, there is only one community. With these consideration, sir, I beg to move that report may be adopted, unquote. This is the voice of Sardar Vallabhbhai Patel in the Constitution Assembly. You are celebrating See, now the problem is we want to harvest the legacy of the Sardar Patel. Those who wanted the legacy of the Sardar Patel in the constitutional terms are opposing the bill. Those who wanted to erect the statue of Vallabhbhai Patel and erase the concept of Vallabhbhai Patel wanted to support this bill. That is the problem. Sir, if I am permitted to go to the genesis of the Waqf, which was originally enacted in the year 1954. After that, the Act was
amended frequently 59, 64, 69. Thereafter, comprehensive amendments were made in the year 1984. My sincere question to the Treasury benches and the Honorable Minister. Right from the 1984, whenever amendments were brought in this House, there was a basis. There were deliberations. There were consultations with stakeholders, which was appointed by either by the Parliament or by the President of India or the Prime Minister of India. 1984 amendment came into existence on the basis of the report submitted by the Waqf Inquiry Committee appointed by the Government of India in the 1970 by the Parliament. So a committee was formed in the year 1970. The report was placed. After 14 years, the amendments were made. I surprised when I went through the document in 1970. What a beautiful and sensible deliberation took place in 1970. In spite of that, the protests were made against 1970. Late, it came in 1984. Madam, if at all so many recommendations were made in 1970, in 1984, the Parliament was enabled to take 2 amendments. One is for limitation, which was extended to 30 years for the properties. The second one is the act applicable to the evacuee properties. No other provisions were implemented. Not because of the protests of the Hindus, the protests by the Muslims themselves. It was fairly accepted by the Nehru and government. After that, 1995 Act came into existence. I am an antibiotic, so that I have to take. See, what I wanted to impress upon the minister and the House, whenever the amendment came into existence, on the reasonable basis, on the institutional outcome, the amendments were done. Take 1995. 1995, how the Act came into existence? Sorry. In 1985, the reason statement objection reason, para 2, I quote, comprehensive amendments of the Waqf Act were made in the year 1984, which were based largely on the recommendation of the Waqf Inquiry Committee set up in December 70 to inquire the administration of Waqf all levels and response to a demand made by the Parliament members during the discussion of Waqf bill. Only 2 amendments. Thereafter, the demand was made by the Muslim community to have a relook, and accordingly, it was placed in the Parliament, and 1995 Act came into existence. Now again I come to 2013. 2013, on what basis? Para 2 of the reasons and objectives. The Prime Minister's High-Level Committee for Preparation of Report on Social, Economic and Educational Status of Muslim Community, in its report submitted to the Prime Minister on 17 November 2006, which is known as Sachar Committee Report. So what I wanted to say, whether it is 84, whether it is 95, whether it is 2013, there were bases, there were consultations, there were consensus arrived. Then the white paper was filed to the Parliament. Then they brought the amendments. Now tell me, please tell me, on what basis this bill is being brought in the House? On what basis? You can say so many stakeholders. How many stakeholders came to the JPC and substantiated our claim? Nothing. Sir, madam, all right. The way in which the bill is brought and piloted is still itself is something surreptitious measure. Surreptitious. Now, I am coming to the objects and reasons of the present bill. The present bill says they are admitting, para 2,
based on the recommendations of the high-level committee under the chairmanship of Justice Sachar and the report of the Joint Parliamentary Committee on Waqf, the Central Waqf Council, and after having detailed consultation and other stakeholders, comprehensive amendments were made in the year 2013. Your admission, unquote. Then you start the same paragraph, I quote, despite the amendments, please hear, despite the amendments, it has been observed that the Act still requires further improvement to effectively address issues related to the powers of the Waqf Board, registration and survey of the properties, removal of encroachment, including the definition of the Waqf. 5 components. You said, in addition to the 2013, even on the basis of the Sachar Committee report, you wanted to address 5 more components according to you, which are missing in the S12 bill, the S12 Act. Let us pursue. Now I come to your 5 pillars. I can easily demonstrate that the definition of the Waqf, it is nothing but artfully confused for the non-existence of Waqf. Removal of the encroachment, it is nothing but empowering the government to grab the Waqf property. Survey of the property, it is nothing but a mockery because Government of India already filed an application, filed an affidavit before the Supreme Court. More than 90% survey is already over. Now you are coming for survey. Registration of Waqf, it is not at all humanly possible according to your text. I will come to that. Powers of the state boards, it becomes recreation club. I will demonstrate. Sir, as a student of law, I got anguish when see the amendments. And I challenge the minister with the due humility. Please show one improvement on these 5 heads beyond the 2013 Act. Then I will ready to salute you. You can't. You can't. On the contrary, Madam Chairperson, I have been in the Parliament more than 22 years. I know the legislative business. Being a lawyer, I am well versed. But have you come across a bill is being brought to the Parliament cunningly and cleverly to remove the amendments which were brought in the 1995 and 2013 after due deliberation and approved by the same Parliament? If you really honest, you must repeal the 2013. You must repeal the 1995 because most of the amendments brought in 1995 in 2013 were completely removed by way of this amendment. What does it mean? What does it mean? I want to quote the quote of V.R. Krishna, a known jurist. I quote, Parliament is a great inquest of the nation, the great auditor and ombudsman of the executive, the final arbiter, policy monitor, and destiny discerner of the people, unquote. I dare to charge the government that this Parliament is being used as a mere ventilating chamber and it has been undermined. It is nothing but an unpardonable onslaught on the constitution religion. One day you will be repent. Now, I will turn to the provisions of the bill. 5 components, definition of the Waqf. My learned friend, including Kalyan Banerjee, everybody, even Akhilesh, my brother Akhilesh, said about the practicing Islam. Then nobody should be indulged in contrivance. Where you got all this language? I am a Hindu. I may be a believer. I may not be a believer. But when you are entrusting a property, you must measure my honesty. Whether I am honest or not. If I am a fraud, following the Hinduism is useless and nonsense. You never bother about the honesty and transparency. You are always concerned about only religion. That is the problem. Sir, I have not come across such a provision in any other law in any other country. So what is meant by contrivance? How can you measure the contrivance? So Islamic practice and I am having
Please, madam. I can get the time from Congress also. They accepted it. They accepted it. I am coming only definition. Too much of intervention. We could not speak in the parliamentary. See, the definition of the Waqf itself, the attempt that has been made by the government, according to you are saying that not Indian countrymen, your entire attempt, I want to say it is nothing but a diabolical contrivance. Diabolical contrivance. Then you add new sentences. What are the sentences? Section 3, 3A. 3, what is happening in this country? Have you come across the Transfer of Property Act? Section 3A says only the real and original owner can donate the property to the Waqf. What is this? Only owner can transfer. If a non-owner transferring property is not alienated, it is invalid. It is invalid. I can spend my own money. If I am taking money from my brother, it is a stealthy. Why you are breaking such act? I am not able to understand. Then 3B. See, no. Madam, it's a serious issue. Now, all these things are introduced new. Subclass 3C. Any government property identified or declared as Waqf property before or after the commencement of the act shall not be deemed to the Waqf property. How many lawyers in the house I didn't know? How government property identified and declared as a Waqf property. Who identified? Government. Who declared? Government. Who investigated? Government. You will declare, you will identify, this property is my property and it will not be deemed as a property. Of course, all constitutional bodies having discretion. Justice Patanjali in 1960 said, yes, we are having judicial discretion, but judicial discretion should not be a caveman discretion. Your discretion here is caveman discretion. So, in the name of the improvement, the government attempts to defeat the concept of Waqf and you want to snatching the entire Waqf property in the name of the act to the government. Coming to the second, survey of the Waqf properties and removal of the encroachment. That itself is contradictory. Survey of the property is affirmative. Encroachment of the Waqf property is negative. We wanted to club it more in one. Section 4, Madam Chairperson, survey of the property for the Waqf in the STL Act, in the present Act, a survey commissioner has been designated, appointed by the government, independent to the government. He is not an independent government officer. So when dispute comes to the government and the Waqf board, the independent officer must follow the civil procedure code to investigate the title and come to a conclusion. He is a civil court. Now, survey commissioner has been replaced with the district collector. Yes. My honest question is, any dispute between the Waqf board and the government, how a collector can be a judge? Yes. You know the principle of natural justice. No one can be a judge for his own cause. Yes. Same collector is sitting and he is deciding who is the owner of the property. Unknown to the law, unknown to the criminal jurisprudence, unknown to the entire legal fraternity. Zameen lena chahte hain. How collector can investigate? Then this bill want to revisit the encroachment. Survey is over, now encroachment. Please hear me. You said you wanted to revisit the enforcement according to recent object. Section 54 deals with encroachment. Please see your bill. Any small attempt? Did you change a full stop and comma? Did you change a single letter in 54? You did not change anything. But you are claiming in the recent object that we wanted to revisit in the bill. On the contrary, what you did it, as my friend put it, 52A, you wanted to make very stringent laws to protect the minorities of the country.
The SOL Act says, the present Act says, regress imprisonment and penalty. You are saying that it is simple regressment. Simple imprisonment. And the offence committed in that Waqf Board presently is cognizable and non-bailable. You are making it bailable. I want to recall the Bilkis Banu. The same thing is happened here also. The next, sir, then tribunals. In 1995 and 2013, Madam Chairperson, as a student of law, again saying, the creation of tribunal itself, we want to segregate the lengthy process of the judicial process in the civil court and high court and supreme court. That is why we have so many tribunals. Telecom tribunal is there, income tax tribunal is there. Why? There were a lot of cases in the civil court, district municipal court, subordinate court, then district court, then high court. So such a simple and peculiar matter should be referred to the specific court for which the constitution permits you constitute a tribunal. You constitute a tribunal and very clearly said tribunal decision is final. Why it is final? Already survey commissioner has been conferred with the civil court. He is not an individual man. He is an institution under law. He is following CPC. When he is following Civil Procedure Code and Indian Evidence Act, the SOL Act, he himself is court, first court. The second court is tribunal. Third court, it is permitted in the law, on suo motu or on application, it can go to high court. Where is your problem? Where is your problem? But you wanted to say, tribunal is not final, we will decide. What type of jurisprudence you are having? Then come to the registration. Madam, registration. 36-1. Earlier, 5 minutes. Please, 5 minutes. I will take my time. So, no. Yes, minister is having patience. Registration. Okay, tell. Registration. Come to the registration. Come to the registration. Earlier, the Waqf property can be declared by virtue of section 36(1) as Waqf property after the due process. What are the process? In the Act itself says. Now, you want to bring 7A. What 7A says? 7A is a peculiar provision which will defeat the entire Waqf properties. I will read, please permit me to read section 7. Huh? No, section 7. 14. Here. Section 7. Oh, no. No. What is removed? 7A. Sorry, Chairperson. No. 7A, now, new provision. It shall not be registered, the property shall not be registered unless the dispute is decided by competent court. The power has been entrusted to the collector. Collector will hear the matter for registration. During the registration, any dispute is found, then the final decision will not be taken. It will be decided by the court. Which court? Up to Supreme Court. Thereafter, section 10, no suit, no appeal will lie upon that. What does it mean? You wanted to say this property is not Waqf property, go for the dispute, it will go to Supreme Court, it will take 30 years, till then this property will be deemed as government property. What does it mean? It will be deemed as a government property. What does it mean? Then come to the register. Register also completely impossible in way it was dropped. Madam Chairperson, the constitution of boards, all members have spoken about. I do not take much time. Why you are injecting non-Muslims? HRNC Act are there in each and every act. Hindu Religious Endowment Board Act are there in all states including Tamil Nadu.
What happened in Tamil Nadu? In one temple, so many acres of lands were available under HRNC. Out of the income, HRNC board decided to run a arts college. Arts college. Recruitments were my professors. On merit, one Muslim came. Immediately, RSS and Hindu Munnani gave a categorical statement. It is our property. Why you are accommodating a Muslim professor? Now we are saying property is something different, religion is something different. Baba, don't teach lessons. My prayer is, our prayer is, religion is something different, politics is something different. Don't mix it. Don't mix it. That is our prayer. If you want to save this country with the integration under this secular fabric, please segregate the politics and the religion. Now I come to... No, I am concluding. Section 40. Section 40 very important. Section 40, madam, any property of the work property converted into trust or converted into Societies Act, none other than else, by the statutory bodies of the concerned state, is a work property. If it is found by the board, then the board can initiate inquiry according to this act by way of survey and by way of the deciding title, and ultimately it comes to a conclusion it is a work property. If it is not there, you leave it. Why you are removing this provision? What is the reason given to this? It was not at all deliberated in the JPC. Madam Chairperson, Madam, I am closing. Madam, 2 minutes, I am closing. Madam Chairperson, lastly, 108A, overriding power. That is the safeguard. Whatever be the special act, take it PCR Act, Prevention of Corruption, Civil Rights, take it SC/ST, take it Dowry Prohibition. Whatever be the special legislation meant either by the Assembly or by the Parliament, such a overriding power must be there to protect the interests of the particular community. Yes. You are removing that. At last, soon after the independence, 1 minute, I am closing it. Soon after the independence, the Prime Minister of India, soon after the independence, please, Mani sir. One sentence I read close. Soon after the independence, Prime Minister of India used to write all the chief ministers of India, all the states. I am quoting the official record. Letter to the chief ministers by the Prime Minister. I quote, I have a great deal of evidence to show an organization which is in the nature of a private army and which is definitely proceeding the strictest Nazi lines, even following the technique of organization. The Nazi party brought Germany to ruin, and I have little doubt if these tendencies are allowed to spread and increase in India, they would do enormous injuries to India. No doubt, India would survive, but she would be grievously wounded and would take long time to recover, unquote. Who said it? Pandit Jawaharlal Nehru. What is the organization? RSS. I want this government. Don't go along with RSS. Come to conclude. Excellent. Madam Chairperson, I rise today to talk about the Waqf Board Amendment Bill 2025. Madam, the Muslim community in our country needs to be provided with support for their upliftment. This minority community faces economic, educational, and social hardships. As per NSSO, nearly 31% of urban Muslims live below the poverty line, madam. Their average monthly per capita expenditure is among the lowest across all major religious groups. Despite constituting 14% of the population, Muslims hold a mere 4 to 5% of government jobs and less than 3% in corporate employment.
Their high dropout rates in secondary and higher education adds to their struggles, preventing their upward mobility, madam. Madam, there is a need to take care of their welfare and uplift the lives of the minorities. In the light of these challenges, the presence of the vast Waqf properties valued at over 1.2 lakh crores of rupees and covering approximately 36.18 lakh acres presents an opportunity for economic and social transformation, madam. However, these properties have largely been underutilized due to administrative inefficiencies and mismanagement, and several times with malified intentions. Our party firmly believes that these resources must be used for the welfare of the Muslim community, particularly the women, the youth, and the downtrodden, madam. Madam, there is a need to take care of welfare and the upliftment of the lives of the minorities. In support of this vision, we are the first party that advocated for the establishment of the Joint Parliamentary Committee. The functioning of the Joint Parliamentary Committee has been both extensive and transparent. The committee's engagement was one of the most inclusive in the entire parliamentary history. The committee engaged with 284 stakeholders, 25 state Waqf boards, 15 state governments, and various ministries. A total of 97.27 lakh representatives were received, considered, and discussed, madam. The deliberation spanned over 128 hours and 10 minutes. The result of this humongous exercise was the 944-page report and a revised bill with 14 amendments. Among these, our party, Telugu Desam Party, suggested 3 important amendments to ensure the welfare of Muslims. One crucial amendment ensured the prospective application of the Waqf by user clause. This means that all existing Waqf properties registered under this provision will remain protected even without a Waqf deed. By ensuring this amendment, the TDP safeguarded the interest of the Muslim community and ensured that their properties shall remain intact. Our property, madam, also played a pivotal role in strengthening state authority regarding disputes over wrongful claims by the Waqf boards. We moved an amendment replacing the district collector with a designated officer above the rank of the collector to handle such disputes. This amendment empowered state governments to appoint a higher ranking officer, ensuring a more robust and fair and broader and larger resolution process, because we feel, madam, that there is a need to take care of the welfare and upliftment of the minorities. The TDP also proposed an amendment to extend the timeline for uploading Waqf property documents on the central portal. Originally, the bill required registration within 6 months, but recognizing practical challenges, we pushed for an extension. The JPC accepted, we are thankful, our proposal allowing the Waqf Tribunal to grant extensions in selected cases where valid reasons for delay exist. This ensures that all Waqf properties have sufficient time for proper registration. All this, madam, we do because we still feel that there is a need to take care of welfare and upliftment of the lives of the minorities. The TDP has put in effort to safeguard the Muslim interest and ensure their welfare. The YSRCP has merely played politics.
instead of working for the true development of the minorities in the state. Their representative on the JPC has attended just 18 of the 38 JPC meetings, whereas our party has attended close to 90% of the meetings to protect the rights of the minorities. They have treated Muslims as nothing more than a vote bank, while we see them as an integral community that deserves protection and upliftment. The TDP's role in shaping this bill shows our commitment for Muslim and minority welfare. Ensuring the welfare of minorities has always been the top priority since the formation of our party, madam. Under the leadership of our founder, Sri N.T. Ramarao Garu, in 1985, TDP established Minorities Finance Corporation, the first of its kind in India to provide financial assistance and business opportunities to Muslims. Under the visionary leadership of Sri Chandrababu Naidu Garu, welfare, upliftment, empowerment for the minorities has always remained a priority for the Telugu Desam Party. Madam, on 25 July 2002, Dr. APJ Kalam was sworn in as the 11th President of India. Please recall that our Honorable Chief Minister, Sri Nara Chandrababu Naidu, proposed his name. Again, ma'am, in 1991, Sri Laljan Pasha Ji has been elected as Honorable Member of Parliament to this House. In 1996, TDP declared Urdu as a second official language under the leadership of CM Chandrababu Naidu Ji, improving educational and administrative opportunities for Muslims. In 1998, TDP established Maulana Azad National Urdu University in Hyderabad, one more university in Kurnool. In 2001, TDP established Hajj House in Hyderabad, one more in Vijayawada, and also launched air travel facilities. We introduced Ramzan Tofa scheme, providing financial assistance to 10 lakh Muslim families annually, spending 50 to 60 crore each year. Provided monthly salaries to imams and mozams ranging from 5,000 to 10,000. Spent 4,000 crores on minority welfare programs between 2014 and 2019. Introduced Dulhan scheme, offering financial aid of 163 crores to 32,722 brides. Started foreign education scheme, providing 10 lakh each to 500 Muslim students annually. Held job fairs distributing 113 crore scholarships to 5 lakh Muslim students. Invested 31.64 crores in post-matric scholarships for more than 39,000 Muslim students. In conclusion, madam, why we did all this? Because we strongly believe that there is a need to take care of the welfare and upliftment of the minorities. In conclusion, the Telugu Desam Party has always stood by the welfare and upliftment of the Muslim community, ensuring their rights and development. In line with this commitment, I urge the government to consider providing flexibility to the state governments in deciding the composition of the Waqf boards. Given that Andhra Pradesh has already enacted the Andhra Pradesh Charitable and Hindu Religious Institutions Endowments Act 1987, permitting religious autonomy. Providing states the power to determine composition of the Waqf boards will ensure the welfare of the Muslim community. This step will ensure the TDP's dedication to the inclusive growth and welfare of the communities. Madam, once again, in the interest of the Muslim women, in the interest of the Muslim youth, in the interest of the Muslim downtrodden, hoping that the earlier suggestion of giving flexibility to the state governments will be taken into consideration while framing the rules of the Act. We support the Waqf Amendment Bill 2025. Thank you, Madam, for giving me this opportunity. माननीय सदस्य श्री राजीव रंजन जी,
अरे हाँ इतना तो तुम्ही ना क्या सेटिंग हुआ? आपका सोर्सेस अच्छे नहीं, आपका सोर्सेस अच्छे नहीं। सभापति महोदया, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा हो रही है और चर्चा के प्रारंभ से ही ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे यह कोई वक्फ संशोधन विधेयक जो है ये मुस्लिम विरोधी है। और यह आज से नहीं है। जब ये वक्फ संशोधन विधेयक इस सदन में पेश हुआ था जेपीसी में जाने के पहले, तब से ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश में और पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं है, कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। क्या है वक्फ? वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है वक्फ। ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसे ये कोई मुसलमान, हाँ उस ट्रस्ट को ये हक है, उस ट्रस्ट को ये अधिकार होना चाहिए कि वो मुसलमान समुदाय के हर वर्ग के साथ, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय करे।